मार्ग निर्देशन और निर्देशन, not only marg निर्देशन for the event also, we have been able to achieve this height. Welcome, sir. Welcome all. Welcome, Vishnu Prasad Sharma ji. Welcome, Madan sir. Welcome, Agnihotri sir. Welcome, Patankar sir. Welcome, Madam Kamini Dhiman ji. Welcome today. स्वागतम स्वागतम. वेलकम हरीश वर्मा जी और हमारे तीनों स्पीकर मैडम पारुल जी, मृणाल अक्रे जी और पटनकर साहेब. आज बड़ी खुशी की बात है, अनूप गक्कर जी भी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं. मतलब आप लोगों के सहयोग के कारण ही ये यात्रा अनंत यात्रा में परिवर्तित हो रही है. मुझे बड़ा सुख कहते हुए महसूस होता है कि यू ऑल आर द पिलर्स ऑफ दिस webinar series. Thank you and welcome. Gratitude. I would like to communicate my gratitude to you all. So, without wasting much time, I would like to request Professor Vishnu Prasad Sharma ji, President Vishwa Ayurved Parishad Assam and ex-principal Guwahati Ayurvedic College for his welcome address. Jagdishwar ji, pranam. हाँ दादाजी नमस्कार. प्रोफेसर दादा नमस्कार. 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 Namaskar. Good evening to everybody. Respected Professor Madan Thangavaluji, respected Professor V.K. Agnihotriji, respected Dr. Pawan Kumar Sharmaji, Bodhya Rajan Patankarji, distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Dr. Professor Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this evening webinar on concept for patient safety. Today we have a very important seminar. So in this evening webinar, we have eminent speaker, Bodhya Parul Joshi, Principal, Sri Bala Hanuman Ayurved Mahavidyalaya, Gandhinagar. I welcome Madam to this evening webinar. Next, I want to welcome Dr. Mrunal R. Akre, Assistant Professor, Department of Devbogna, Global Institute of Ayurveda, Rasco. So once again, and Dr. Patankar Sahib. Speaker. जी सर. I welcome Dr. Rajan Patankar ji and eminent speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this evening webinar. So once again, I welcome all of you. Thank you. Namaskar. Over to Pawan ji. Thank you, sir. Thank you very much. Now I would like to request for moderation our senior guardian, Dr. Madan Thangavelu sir. Madan Thangavelu sir is here. Ji, namaskar. Welcome, sir. Namaskar ji. Thank you. Ji. Pranam, 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 sir. Pranam ji, pranam. Pranam to all our senior colleagues. And before here. that, sir, I would like to communicate one, sir, happy Vishwakarma Puja, because that is biggest festival in West Bengal. But here, no, in Bhopal, nobody is asking Vishwakarma. Vishwakarma had created Sudarshan Chakra, Trishul, and means so many, or that after him only Mayasur is being considered as architect. Every, जैसे हमारी हमारा सोफी जी कहता है जी, myths are metaphorical facts. और इसमें कुछ इसके पीछे there are a lot of stories which we may not understand fully, but behind each of these is a very big logic and a reason for this. Welcome all to the 450th webinar. And today's congrats once again to Pavanji for
showing us the importance of strength and stamina, and how to bring people together and how to keep the activity going. So congrats, Pavanji, 450, and continuing in your new mission as professor in the university in Bhopal, Mansarovar University in Bhopal. And we look forward, we are grateful that Mansarovar has recognized not only your long innings in industry, but re-invited you to your home state, Madhya Pradesh, and given you the additional responsibility of being equally creative in new things. Yesterday, we talked about a very, very important theme, palliative care. And today's theme about patient safety overlaps a little bit with palliative care, particularly for older people where they're more sensitive to these kind of issues. This is one of the 11 days recognized by the World Health Organization, this day today. And there are 10 other themes that are recognized by the WHO as important and recognized to be of a global importance, including in them Hepatitis Day, Antimicrobial Awareness Day, AIDS Day, World Blood Donor Day, Immunization, Malaria Day, etc., Tuberculosis Day, and so on. There are 11 days associated with this. Now, when we look at the World Health Organization's webpage, you will see, I once again take the liberty of showing their webpage just to put some focus on where the thinking is globally in this theme, and where sometimes, unfortunately, a very narrow perspective is offered about safety. अब हम सिनेमा की तरफ अगर देखो तो शोला सिनेमा की याद आती है यहाँ, उसमें गब्बर सिंह कहता अब गोली खाओ. अब ये है एक तरफ सोच लोगों की, गोली खा के जियो. There is something wrong about it. And the emphasis is too much on medicines. And our whole area of AYUSH has a much larger mandate. We have many interventions, etc., etc. So we are trying to open that space. And if we look again, the objectives of the Safety Day 2022 is to raise awareness of the global burden of medication-related harm, to medication errors and unsafe practice, etc. Now, empowering patients and families to be actively involved in the safe use of medication. This relates, again, as I said earlier, to our event. The unfortunate thing is, again, that we think health is to do with medicines. And that is a very, very unfortunate global problem. And that it is a responsibility for us and our colleagues to show that health is not related to taking medicines, and it is not related to medicaments, that there is another whole concept of health. This whole thinking about one of the medications, steroids, has reached such a proportion that it is used even in common language. Yahan pe, I just want to finish off with this one image. Look at this image here in the middle, Monsoon on steroids. What to know about Pakistan's catastrophic floods. Ye jo prayog and the thinking that medicines and tablets will help everybody, and that is what safety is all about. That somehow is a very narrow perspective. And I hope in our discussion today, particularly Parulji, who always guides us with a bigger vision for the future, we will hear from Parulji, and we will hear from all who are gathered here today. Akreji is here. We will hear from Elderly Mind, a younger person in the community, and all others we will contribute as we go along. Pavanji, once again, thank you. Congrats on the 450th webinar. Thank you for bringing us all together. Harishji has also joined us from Toronto, and so many other people are here. I can see some new faces. Mayur, namaskar. Thank you for joining there.
Abhishek ji, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you for joining us today. With those few words, Pawan ji, floor is back to you. Thank you, sir. My only message here is how to widen this perspective about safety and safe use of not only drugs, but also therapeutic interventions and etc. But we look forward to learning more from Parul ji and Mrunal ji from. Patankar Sahib also, sir. Patankar ji will also contribute. Namaskar, namaskar. Thank you, sir. Now, without wasting much time, sir, I would like to request Madam Parul, Madam. Welcome, Madam. Kindly unmute yourself. Yes, sir. Welcome. Good evening, everybody. Parul ji, pranam ji. Pranam and good evening, everybody. This topic which we are going to discuss today is really of great value. And we are discussing this again. We had discussed in, I think, 221st episode. And now we are discussing it again. So, is my visible? My slide is visible? हाँ जी. Okay. Then, Parul ji, इसको अगर थोड़ा वो नहीं full हो रहा screen है. mode पे लाएं It's not तो happening. It's not happening. Never mind, जी. Never mind. With your gracious presence, sir, within 1 year means after 221, we are on today 450. Means 228 webinars in 1 year. Thank you, Parul ji, for reminding. सर जी स्लाइड जो है वो इसी मोड में रह रही है, आगे नहीं जा रही है. सो लेट मी कंटिन्यू विथ इट. हाँ जी. So patient safety, Ayurvedic standards with special reference to comorbidity. By comorbidity, I mean Prasuti Tantra, Stri Rog and Bal Roga. So when we are talking about this, along with Vishwakarma Jayanti, we have Ozone Day also today. And Pawan sir rightly reminded me that Vishwakarma ji is also a very integral part of Ayurveda. He designed those instruments for Bhagwan Dhanvantari, and because of that, our Dhanvantari Sampradaya is functioning so nicely, and we are able to proudly say that we have such Shastra which are able to tear the hair from midline. So all that is thanks to Vishwakarma Prabhuji. So humble obeisance to him. And today is Ozone Day also. And the slogan today is my favorite slogan, that medication safety, medication without harm. And that is actually the slogan of Ayurveda also. So this time the Patient Safety Day is going in accordance with Ayurveda, the Indian system of medicine. So let's go move ahead. What is patient and family? It's illness, body, mind, social, spiritual, daily living, desires and goals. Oh, how does this desires and goals go with daily living and spiritual and social? What is all this? Human being is a social animal, needs society to sustain oneself. So this social interaction are again based on mana and atma of the person concerned. So that again comes to Prasuti Tantra. So whenever I teach Prasuti Tantra, I always go to Charak Sharistan and I talk from there. Charak Sharistan has been talking about Adhyatma and how in the last, that is the 8th Adhyay of Charak Sharistan, Maharshi says, I have been talking all this for Shreyasi Prajartham. Why Shreyasi Prajartham? So parents beget a baby that is having better properties, better gunas than the parents. So every person, being a human being, has some lacunas, some weak points. Those weak points a person never wants to get transferred to the baby.
maybe a baby, a male child, maybe a female child, but parent never wishes those weak points to be inherited by the child. So that is Shreyasi, Shreyaskari, better than myself. That can be achieved only when the parents are conscious and the parents know their weaknesses. So when we talk of Garbha Sanskar or Adhijanan Shastra and all that, actually there are no medicines to be given. What has been specified by Maharshi Charaka is Adhyatma. There is no medicine there in Adhyatma. You need to know oneself, and knowing oneself, no medicines are required. But even then, Acharya have given Medhya drugs. Why Medhya drugs? Medhya drugs always help in focusing or thinking or remembering. So that can be achieved. And that's why even in Garbha Sanskara or Garbhini Paricharya, Maharshi has talked of giving Brahmi, Endri, etc. drugs to see that the child that comes has better mental capability. So mind, social, spiritual, daily living are all again linked with the desires and goals of the person, and because of the person, the society the person is affiliated with. So that again has effect on the body and the illnesses the person is going to face. Illnesses the person has already faced have effects on the mind and body of the person, and again the mind and body of the person brings about the illnesses. So it's a vicious chakra and keeps on going. The whole person approach in treatment. Now, tailored interdisciplinary assessment and a personalized treatment plan. That is what Ayurveda has been telling since so many centuries. So, family caregiver support, symptom management, nutritional support, support care and counseling, spiritual care, financial and social support, coordination and follow-up. This is what we Ayurvedic people always do. And now since WHO has started speaking on it, I'm glad to feel that now our message is going global. So that is a real wonderful achievement we have had because of our PM sir. So we are actually thankful to him on his birthday today that he has been struggling and putting yoga and Ayurveda on international platform for Vasudhaiva Kutumbakam Bhavana. And as our Ayurveda says, Atha Bhuta Dayam Prati, जीव मात्र के लिए हमारे मन में दया भावना है, जीव मात्र स्वस्थ रहे, स्वस्थ जिए और स्वस्थ ही मरे, ये जो भावना है वो चरितार्थ हो रही है. इसलिए ये देख के बड़ा हर्ष हो रहा है आज. Definition of Ayurveda clinic: standalone outpatient healthcare facility with all that which has been talked about in the NUB accreditation point. Why do we need accreditations? Can't we have our own Ayurveda style clinic and can't we practice in that way? We can do it, but since in the modern era, we need जो दिखता है वो बिकता है. So because of that, दिखना चाहिए, we need an accreditation. And I have seen that in so many hospitals and even clinics, they put a board there. We are NAC accredited, we are NAB accredited, we have this 1 star, we have 2 star, like that. And so the patients are lured over there. That is the trend at present. So we can't overlook them. And those we need to follow the standards, protocols, and SOPs. But we have our own standards, our own protocols, and our own SOPs. For example, it's my subject, so I'll be talking about that only. Uttar Basti SOP. So there is a Purva Karma, Pradhana Karma, and Paschat Karma. My seniors and my gurus taught us how to give Uttar Basti in a female.
So they used to clutch the Grivadharak Yantra, that is cervical upper lip, and then drag the cervix down and then give Uttar Basti. So when I was studying, I used to see that the patient has severe pain when they clutch the cervix and drag it down. So when I was supposed to give Uttar Basti, I saw that can I try not to clutch the cervix and give Uttar Basti? So since I was just learning, the cervix used to move and I used to get scolded from my Guruji, Ilaben Deshpande. Why are you doing all these new things? Don't do it. Follow the standard procedure. But after giving 3-4 bastis, I started not to grip the cervix and then give the Uttar Basti. And I also used to talk to my patients saying that, see, you need to have a good stool. And if the stool passes normally, then and then your Basti will not give you pain. So what should I do? So initially I used to give her Erand Prashtaritaki. Then I switched to Erand Sneha. And then I switched to only warm water. So I came to know that if the patient takes proper food and if we give her warm water in the Brahma Murita, her tunnel will be clear. And at that time, since there is no blockage there, the Uttar Basti Dravya will go smoothly and the patient will not have any pain because there is no avrodha there. And so the karma will not produce any pain over there. So such small changes can be made and then the patient will feel relaxed. And many times my patients used to say, "Aapne Uttar Basti nahi di? Aap kya kar rahi hai?" Arey, Uttar Basti to ho gayi. Come on, go up and put that aunty lagao apne pair ko. So they could not feel that pain and they were so happy. So that's what we can do. 8 standards for Ayurvedic clinics that have been put by NABA: assessment, continuity of care, AAC, same way COP, MOM, PRE, IC, CQI, ROM, FMS. So continuity of care is a point I would like to share over here. Post-retirement, I had joined Manjushri Ayurved Medical College. It's called MRIS. It's near my Kolkata College. They have a wonderful routine that whoever comes, it may be a sweeper, it may be a doctor, it may be a HOD, it may be a lecturer or medical officer also. But the institute gives them a training how they are supposed to work in the OPD, how they will be given the cases, what all should be filled up in the cases, what should not be filled up. So everything they say that in our institute, we function like that. And so you need to take care that if you add to it, no problem, but see that certain points are always followed. So that continuity of care and how we have to data feed in the forms, how to manage them. So the specific trainings were given to specific people, but common training was given to from sweeper to HOD. Everyone was supposed to get them. That's a wonderful way of running an institute. Same way, continuous quality improvement. So that quality improvement on at after Manjushri, I joined Merchant Medical College, and there I made so many changes in the institute. And then the trustee, when I left the institute, because the institute has started functioning very nicely, so now I had no role to play there. So I had left the institute. The trustee told me that because of the changes you made there, madam, our institute got COVID, this protocol certificate, and now we are a COVID hospital and we are earning. So this helps. And for that, the teaching institutes need to see that the standards of Ayurveda clinics have to be taught to the students, and the students have to be made aware of the importance of all these points. For example, infection control. If in an operation theater there is too much humidity there, then there is supposed to be chance of having fungus.
I was working with one medical institute. I was assistant medical officer there, and we were doing cataract operations and all such eye-related operations there. A continuous batch of 3 consecutive surgical days, the patients got infected, all had fungal infections. We checked everywhere, but nothing could be found. The drums were proper, the sanitation was proper, the patients were given pre and post operative medicines properly, all the pads and everything was proper. Then how did they get infection? Then we came to know that the person who was sterilizing these instruments and cotton and swab and all that was not changing the water, because that institute was in a dry arid zone where there was scanty water. The person was not changing the water, and because of that the patients were getting infected, and some patients did lose their eyes. So such things are to be taken care of. It was such a small thing, everything was perfect, but such a small thing had led to such a big disaster. So the standards for Ayurvedic clinics have to be met with and have to be followed. See here the key segments: products, medical services, and well-being. Sir, I need to talk over here about clinician, pharmacist, nurse, case manager, and social worker. Now, what is the role of a social worker in an Ayurvedic clinic? Sir, I have seen, I was working with a TB hospital. There, the social worker used to talk with the patients. He used to go to their beds. TB patients, we know, they suffer like anything. The social worker was a retired bank clerk, and he had offered his services free. He said, instead of sitting at home and talking with people around, I can do something positive here. And the trustee had allowed him. And because of his talking and interacting with those patients, the patients felt very free there. They feel as if they are in their own family. The patients were supposed to stay there for 2 months, 3 months, till they become negative, and then they were discharged. So the social worker can do that. Same way, I myself had an experience when I had dengue last year and I was admitted. The social worker came to me, even though I was head of an institute, I was a medical person. The lady talking with me made me feel so nice, made me feel at home. The nurse there, I still remember of her after so many months. She used to take care of my food and see that the food is served properly at proper time. And I saw that because of her behavior, I never lost my appetite. So that's my own experience I would like to share. One thing I want to say over here is, people talk of infertility management, menarche management, menopause management, PCOD management, hair fall management, osteoporosis management. One person doing all this job. There's nothing new in Ayurveda. A Ayurveda Acharya is supposed to be Ashtanga Ayurveda Gnata, and is actually necessary also. It is said that a person who has read Charak but does not know anything about Sushruta may create many problems. Same way, a person who has only read Sushruta and does not know anything from Charaka is going to make a chaos in his patient care. So, Ashtanga Gnata Ayurveda Acharya can talk about managing all this. But if he says that, मैं करूँगा, हो ही जाएगा. No, it's not so. Need to take everything very cautiously. See that how the patient reacts to you, the medicine and behavior, and go according to it. A personalized care is what Ayurveda is known for, and we need to again rejuvenate our Ayurvedic principles and see that the next generation takes care of it. There are
two types of Vaidya, Pranabhisara and Rogabhisara. Both the Vaidyas are supposed to be Rajamanya. A Vaidya is supposed to be Bahushrutaha, Shuchihi, Dakshaha and Drashta Karma. Bahushruta means who has heard many people. And since I have started hearing people from my student days, that is graduation days, I saw that every person has something new to say. In a webinar, for example, on a webinar on menarche, people will talk of menarche, but everyone has his or her own views, and those views, if heard clearly, guide us, upgrade us. So Bahushritata helps a lot. In Ayurveda, it is said, Charak Sutra 25, that Tadvidya Sambhasha Jnanavardhananam. Same way, Drashta Karmata. Seeing many people working on the same thing. For example, I have seen people, various people, doing cesarean section. Everyone does cesarean section in a different way. So that dakshata comes from seeing people using various techniques. And those techniques, as I said in Uttar Basti, that various techniques, they have their own SOPs, but every person uses those SOPs differently. So when I taught my students and my medical officers not to clutch the cervix and yet insert Uttar Basti Dravya perfectly, they also had the same experience, patient having better result. Shuchihi, as I said in that case, that he was not changing water and that Shuchita was not taken care of and patients lost their eyes. So Shuchita is very much needed, especially in my department, Kaumar Mrityu, it's very much needed. A small mistake, for example, the WHO banned Jata Matra Parichaya, that is giving Garthuthi. So why did they ban? When I went to the field and saw how those elders in the family prepared that Galthuthi and gave to the child, I also said, no, not allowed. You can't give this chaos to the newborn baby. This is going to infect the baby. They never took a washed cloth, never say that the water which they were using was boiled water, not taken any precautions. Their hands with which they had delivered the baby, the same hands they were using for giving the first pration. So that is not allowed. So that Shuchita is not there, then it's going to create a chaos. So WHO did it right. But that thing, Shuchita, should have been talked of, was not talked of, and just saying that, no, you're not going to give that Pratham Prashana is not true also. So a Pranabhisar Vaidya is the need of the hour, and a Pranabhisar Vaidya needs to understand the importance of Trivida Pariksha, Ashtavida Pariksha, and Dashavida Pariksha. Acharya who says that no repetition is talking of 3 types of Pariksha power, and is all concise in Darshana Sparshana Prashnaihi. If Prashna Pariksha is not done properly, then if Darshan Pariksha is missed, then there is no need of Sparsh Pariksha or having all those laboratory values done. I had a patient whose bilirubin level was too high, but on seeing the patient was looking normal. His pulse was normal. And the patient was already selected for an operation. So the medical officer had come to me, madam, should I go for that pilectomy operation? I said, the pulse is normal. Now go for the temperature. Is the temperature normal? So the sister came and took the temperature, and the temperature was also normal. Then I asked the patient, had you taken any medicine in last 1 week? The patient said, yes, that Vaidya in our village had given me nasal drops. Then I said, did you have too much
yellow colored fluid coming out from your nose? He said, yes. When did it happen? Yesterday itself. I said, no operation, because the patient was giving a false appearance that nasya dravya, darvinasya we give, and that brings out the bile, but that is temporary. The patient still has liver problem. So if a person having liver problem is operated for pilectomy, the patient is going to create some problem. So I said, no, stop it. Give him Arogya Vardhini and all other liver tonics, and then call the patient next week, and then we will decide. And after 15 days, my medical officer went for asked the patient to go for pilectomy, and it was successful. So this Trividha Pariksha, Ashtavidha Pariksha are very, very much needed to be taken care of, and none of the point has to be overlooked or it can become hazardous. One patient yesterday was saying that after going for my fracture that डाली है, पट्टी डाली है फ्रैक्चर के बाद, after that I'm having edema in legs, puffiness on face, see my hands how they are looking. So my MO said that, madam, isko Nityanand Ras de de kya? I said, nothing doing. Watch the patient. The patient is having breathlessness. There is some cardiac involvement there. Patient said, yes, I am a patient of hypertension, essential hypertension. And do you take medicine? No, I don't need medicine. आपका बीपी कितना रहता है भैया? हाँ, 140, 100 तो रहता है. So नित्यानंद रस दे कि नित्यानंद रस को बदनाम करवाना है क्या? So we need to see all this. It may be outside your syllabus, but the patient is a patient, and the vyadhi as vyadhi. It may be in a female body, it may be in a male body, it may be in a child body, but those vyadhi lakshana don't change. The paristhiti changes. For example, in prasav, purva prasav, prasav kalin, that is prasava, and sutika, that is paschat prasav. So during that time, we need to have a SOP for management, but that SOP cannot be followed in all cases. Each case is different. For example, I had a patient who had already gone for 3 deliveries. All the deliveries were normal, but this time, the 4th time, she had come to an Ayurvedic hospital, and she wanted us to give her painkiller. We said, we are not allowed to give you allopathic painkiller. नहीं, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे मेरे को डिलीवरी नहीं होगी. अरे हम इंजेक्शन नहीं लगा सकते. अरे she told her husband, अरे मुझे कहाँ लेके आए हैं आप? इन लोगों को तो कुछ आता नहीं है. Her husband was firm that no, we will go for delivery over here only because we want a normal delivery and with no medicine. And then I talked to her. That is what I'm trying to say over here, that well-being, sense of well-being, telling the patient that if you just cooperate us, we will be able to take better care of you. So telling the patient does not work. We need to assure her that whatever we are doing is for your betterment, and your betterment is our goal. So here in that we have seen patients' rights and education. We said a clinic protects patient and family rights. Patient rights are supported. Yes, patient rights are supported. But even the physician, the doctor also has a right. And those rights need to be talked of, which are never talked of. Where a doctor is taken for granted. He is supposed to do this. He is supposed to do this. You have to do this. If you don't do this, you are punished. But what about the patient who has not cooperated, who has not taken proper medicine at the proper time, or in the dose we have asked the person to take? For example, I told you in that essential hypertension patient, the patient having 140, 100 BP every day, where he said, "हाँ, वो तो चलता है, कब का है? कितने सालों से है साहब? 4-5 साल से तो मुझे पता है. And you're not taking any medicine?" No, I don't need any medicine.
The son was saying that इतना गुस्सा करते हैं पापा, घर में रहना मुश्किल हो गया है. That's why I brought him to you. I am not going to take any medicine. मैडम आप समझ लो, मैं कोई दवाई लेने वाला नहीं हूँ, आप ऐसे ही मुझे ठीक कर दो. So in that delivery case and in this Buzurg case, what we need to do is Sattva Vajay Chikitsa. We have to make them realize that they are doing something wrong. They are injuring their own self. And only we need to pray to God that ye hame samjhe aur apnaye. It's not so easy. That's why Chikitsa is said to be threefold: Daivi, Rakshasi, and Manushi. Daivi Chikitsa, we say Daiva Vyapashray Chikitsa. In that, we talk to the Sattva, Aturasya Antaratmanam Pravishya. For that, the patient should be open. And such patients don't open up. So in that delivery case, since we didn't have time, the head was coming down. I had only half an hour. Within that half hour, the patient had to get delivered. So I asked all the staff and my students to go out of the OT. Told her, तुझे करना क्या है? बच्चे को मार डालना है? 9 महीने की मेहनत पानी में डाल दी है? She said, no. Do you want your baby healthy and out living? Yes. Then do cooperate, beta. It's for your own benefit. She didn't cooperate. Just stood up on the table and then I started scolding. We gynecs are very good at scolding. So scolded her like anything. I was in government strata at that time, and scolding a OPC or even an SC/ST was going to bring problems for me. I said, no problem, I will face that problem, but at present I want that baby alive. Scolded her, pulled her down and said, come on, deliver. So my voice must have gone outside. My HOD came. She said, what are you doing? She understood the whole thing. She went to her head and said that you need to deliver. Karti hu. And she delivered the baby in 10 minutes without giving her any medicine. So we need to learn the art of Aturasya Antaratmanam Pravishya, how we can do it in such uncooperative patients. Management of medication. I have been seeing since last some years, that the neo Vaidyas just write so many medicines. Sometimes the number goes up to 25. You never need such medicines. That's why Ekal Aushadha, as Vaidya Gangadharan from South rightly says, that Ekal Aushadh gives wonderful medicine, but for that you need to have faith on your own knowledge, on the Samhitas and the drug. Now the problem is the drug manufacturing. No, I'm not talking of drug manufacturing. I'm talking about the single drug, a herb. For example, Tulsi has antiviral properties. A person having infective fever, you know the person is having infective fever. You know the Tulsi grown in your garden, which is a herbal garden and is maintained organically. Pick up those leaves, wash them with clean water and give to the patient. Ask the patient to chew those leaves. The patient is going to get well. That is how Ayurveda was practiced decades ago, pre-independence time. So that time needs to come again, and we need to focus on single drugs. Now the role of case writer over here. The case writer, I've seen so many case writers making tremendous mistakes. Savita Pen case, it had happened in our Akhandanan. 4 Savita Pen, same day. उसी केस राइटर ने केस निकाले, सभी का नाम सविता बेन और सभी हमारे प्रसूति डिपार्टमेंट के केस, कुछ मेंशन नहीं किया था और केस ऐसे ही दे दी. Now 3 Savita Bens were consecutive, so all the 3 were in a row and they came one by one to our OPD. Now when the second Savita Ben came, mera dimag khanka, this is going to be a problem. So I asked her full name, wrote the full name there,
Then the pharmacist came. मैडम आपने ये नाम क्यों लिखा? To identify her. नहीं वो केस में जाके प्रॉब्लम हो जाएगा. नहीं होगा, नंबर अलग है उनका. हाँ, he said yes, right. So awareness of the pharmacist, awareness of the case writer is very much needed, as much as the medicines given by the doctor. Responsibilities of management. Post-retirement, I have come into contact with so many managements, and it's very, very sad to say that managements don't take any care of what should be given and how it should be given. So the ethical management, I talked to my own trustees saying that they don't pay salary in time. They don't care about their doctors or the staff. They are coming there for money. If you don't pay them money in time, it's going to hurt their ego, and you can't expect them to behave ethically after that. So this is only one. There are many such problems. For example, one principal told me that my trustee is not giving me formalin. How do I preserve that dead body? I said, 1 liter formalin में कितना प्रॉब्लम होगा? अरे he is not giving me, वो नहीं बनिया नहीं दे रहा है मेरे को, तो क्या करेंगे? हाँ, उसको बोला है कि I cannot take care of this dead body. सब आपको जो करना है करिए, ये डेड बॉडी प्रिजर्व नहीं होगी और हफ्ते के बाद इसमें कीड़े लग जाए तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. प्रिंसिपल ऐसा बोले तब जाके उनको 1 लीटर भी मुश्किल से मिला. उन्होंने 0.25 लीटर ही दिया. तो इस तरह का अगर बिहेवियर होगा मैनेजमेंट का, तो हाउ आर दिस पीपल गोइंग टू फंक्शन एंड हाउ आर दे गोइंग टू ट्रेन द स्टूडेंट्स? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हुई है जब हम लोग ये प्राइवेट सेक्टर को लाए हैं. उनको प्राइवेट सेक्टर वाले मैनेजमेंट को भी बिठा के ये सब समझाने की जरूरत खड़ी हुई है. देखिए सर, ये इन्फेक्शन कंट्रोल में पहला पॉइंट है लॉन्ड्री एंड लिनन मैनेजमेंट. जब एड्स और उसके बाद इतने सारे वायरसेस आ चुके हैं, इतने सारे फंगसेस आ चुका है, म्यूकर माइकोसिस के अंदर देखा गया है कि वे कहीं ना कहीं वे फंगस के लिए ओपन थे और उनको इन्फेक्शन लगा है. सभी को म्यूकर माइकोसिस नहीं हुआ है. तो ये लॉन्ड्री और लिनन मैनेजमेंट जो है वो बहुत जरूरी है. ये जब नहीं होता है तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है. और ये सब जब आता है तो think of Ayurveda first. Principles of Ayurveda are very, very wonderful. और अगर उन प्रिंसिपल्स के ऊपर ध्यान रख के सर्जरी की जाए, लेबर मैनेजमेंट किया जाए, पोस्ट लेबर केयर ली जाए माता की, तो काफी सारे व्यापक जो है वो अपने आप दूर हो जाएंगे और पेशेंट जो है वो सुख आयु भुगत पाएगा. Ayurveda offers effective management across the Ayurveda services spectrum, promotive, preventive, curative, even in acute phase or emergency care. साहब, ये किस्सा तो सुनाने में बहुत ही मुझे ये होता है कि पेशेंट को पेन हो रहा था, बेबी हेड नीचे नहीं आ रहा था, और अगर 4 वाटर्स निकल चुके थे, वेजाइना ड्राई हो चुकी थी. हम लोग काफी टेंशन में आ गए, क्या करेंगे, क्योंकि हमको कोई एलोपैथी ड्रग तो यूज करनी नहीं है, और फोर्सेप्स अगर हम लोगों ने किया तो स्टिच का बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा. तो हम क्या करें? तुरंत ही मेरे जो एचओडी थे उन्होंने जात्यादि तेल लिया और she just poured the oil in the vagina, put her both hands, क्योंकि उनके हाथ बहुत ही सॉफ्ट थे, छोटे थे और सॉफ्ट थे, तो she put her hands and like a vacuum extractor or you can say low cavity forceps, उन्होंने पूरा हेड उसका जो है वो खींचा भी, रोटेट भी किया और देखा कि बेबी के गले के जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके 2 पूरे राउंड लगे थे. She removed them with her hands and the baby was delivered normally. तो ये जो है वो इमरजेंसी केयर में भी हम
युक्ति व्यापाश्रय के द्वारा काम कर सकते हैं। और ये युक्ति तिष्ठति उपरे युक्तिज्ञो, जब द्रव्य की बातें करते हैं उसी में उन आचार्य ने बताया कि तिष्ठति उपरे युक्तिज्ञो, कौन से दशमानी तो मैंने बोल दिए, लेकिन कौन सा ड्रग आपको यूज करना है वो आपकी युक्ति पे आधारित है। वैसा ही सर्जरी में भी युक्ति व्यापाश्रय जो है वो सबसे अहम है, तो उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आयुर्वेदिक कंसेप्ट टू पेशेंट्स केयर एंड सेफ्टी के लिए संहिता पठन पाठन बहुत जरूरी है। विशिष्यति चिकित्सति, बहुत बड़ी बात है, अच्छा है। औषध कर्म, शस्त्र क्षार अग्नि यंत्रादि कर्म, सत्वावजय रसायन सब किया आपने, लेकिन देखा पढ़ा सुना उसमें से किया आपने, लेकिन अगर आपने संहिता पठन पाठन नहीं किया तो जिस तरह सुश्रुत पढ़ा है चरक नहीं पढ़ा, दिक्कत खड़ी हुई। वैसे ही चरक पढ़े हैं सुश्रुत नहीं पढ़े हैं, अष्टांग हृदय नहीं पढ़े हैं, या फिर भाव प्रकाश और बेल भी नहीं पढ़े हैं, तो आप काफी सारी चीजें चूक जाएंगे। जैसे कि मेरे थीसिस के टाइम पे हरि संहिता का रेफरेंस लिया था मैंने, किस एज ग्रुप में बच्चा हो तो सही है, वो हरि संहिता का रेफरेंस है। न चरक है, न सुश्रुत, न अष्टांग हृदय, न अष्टांग संग्रह, किसी में ये रेफरेंस नहीं दिया गया है। तो सभी संहिताओं का पठन करके, मेरे जो हेमेंद्र खमार साहब थे वो हम लोग सब सेकेंड ईयर BAMS में थे तब बार बार बोला करते थे, सभी संहिता का पठन करके किस संहिता में किस चीज महत्व की बताई गई है वो आपको ग्रहण करना जरूरी है। वो जब मैंने किया तो बहुत ही आनंद आता है। हु शुड बी टॉट आयुर्वेद, शिष्योपनयनीय अध्याय के अंदर ये दिया गया है। आयुर्वेद अध्ययन कुलज बताया है, यहाँ कुलज यानी पिता बच्चे को सिखाएगा ऐसा नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स मेरी जो सिखाने की पद्धति है उसके मुताबिक ही बिहेव करेंगे तो वे मेरे कुल के हुए। लेकिन मैं खुद इला देशपांडे के कुल की हूँ, इला देशपांडे PV तिवारी मैडम जी के कुल के हैं, तो हम सब क्या हुए, PV तिवारी कुल के हुए। तो ये कुल परंपरा हुई, इसमें ब्लड रिलेशन नहीं है, पठन पाठन का रिलेशन है। और ये आयुर्वेद में बहुत बढ़िया बताया गया है। और ये बात जो मैंने हाईलाइट करी है, विपरीता गुणम शिष्यम न उपनयेत, ये शिष्य जिसके पास ये पॉइंट्स नहीं है, शील शौच शौर्य, शौर्य भी जरूरी है। अगर पुष्पा मैडम उस वक्त डर जाती कि ड्राई वेजाना हेड इज नॉट कमिंग डाउन, बच्चा मर जाएगा, तो वाकई में बच्चा मर जाता और अपयश मिलता है इंस्टीट्यूट को। तो ये जो शौर्य है वो बहुत जरूरी है। और इंस्टेंट डिसीजन लेने की जो प्रत्युत्पन्न मति बताई गई है, वो प्रत्युत्पन्न मति सर्जरी में तो खास करके हमारे प्रसूति तंत्र और बाल रोग विभाग में बहुत जरूरी होता है। क्षण के केसेस में पेशेंट को खींच आती थी, दे हैड राइगर्स, क्योंकि बच्चा मेनिंजाइटिस का है तो मेनिंजाइटिस के बच्चे में तो खींच आएगा। तो उस वक्त डरे बिना उसको मेडिसिन देते रहे, ये ध्यान रखे कि उसको वॉमिट ना हो और वॉमिट जो है उसके श्वास पथ में न जाए। ये सब ध्यान रख के अगर हम मैनेजमेंट करेंगे तो बच्चा रिजल्ट देगा, बिल्कुल देगा। बुखार बढ़ गया है तो भी बच्चे को खिंचाव आएगा। तो ये सब देख के बच्चे को उपद्रव न हो और कोई खवाई गुण्य भी ना रहे, इसको ध्यान में रख के हम अगर खुद भी करें तो हमको देख के हमारे स्टूडेंट्स भी करेंगे। स्टूडेंट्स के एथिक्स बहुत जरूरी है। और कई बार सीनियर्स बोलते हैं आजकल के स्टूडेंट्स तो बहुत बढ़िया है साहब। मेरे स्टूडेंट्स जब आए तो मैंने उसको पूछा, क्योंकि हमारी तो फर्स्ट बैच थी तो हमारी तो बहुत चहीती बैच है, तो मैंने उनसे पूछा आप में से कितने लोग आयुर्वेद पढ़ने के लिए आए हैं। टू माय प्लेजर 34 है हमारे पास, एक चला गया तो 34 है, उसमें से 30 बच्चों ने हाथ ऊपर करके बोला हमको आयुर्वेद सीखना है, इसलिए हम आए हैं। और हम लोग ऐसे परिवार से आ रहे जो कहीं ना कहीं आयुर्वेद से जुड़े हैं। तो दिस जनरेशन इज कमिंग विथ सो मच एक्सपेक्टेशन एंड वी ऑल्सो कैन डू इट। तो ये हम कर सकते हैं बच्चों के लिए, और उनके द्वारा हम आयुर्वेद को, और आयुर्वेद के द्वारा हम समाज में
देश में और विश्व में एक मैसेज ले जा सकते हैं। शल्य चिकित्सक और खास करके हमारे गायनिक में तो राजार्ह होना बहुत जरूरी है, और राजार्ह न हो तो उनको मान्य नहीं करने चाहिए। करीब करीब हर रोज एक न एक तो आता ही है फोटोग्राफ, जिसमें बताया गया है कि उनकी डिग्री जो है वो कहीं पर भी पड़ी न हो। ऐसी डिग्री वाले शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो गांव में पता नहीं क्या करते होंगे। तो शल्य और सुश्रुत को हम फिर से बढ़ावा दें, क्योंकि जब तक शारीर ज्ञान, शरीरे सुश्रुतो श्रेष्ठ, तो सुश्रुत संहिता में शरीर रचना का जो ज्ञान दिया गया है उसको हम ठीक से समझ के उसका हम लोग बच्चों को समझाएं, तो जब तक उनके पास एनाटॉमी का थरो नॉलेज नहीं होगा उनमें विश्वास नहीं आएगा, और विश्वास नहीं आएगा तो वे लोग इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं देंगे। कल पैलिएटिव केयर की बात हो रही थी, मैं उसमें यही बात कर रही हूँ कि पैलिएटिव केयर आयुर्वेद में बताई गई है, और हमारे ऑब्स्टेट्रिक्स में और न्यूनेट्स में तो पैलिएटिव केयर कभी भी आ सकती है, कभी भी इमरजेंसी उत्पन्न हो सकती है, और हम अगर सावध नहीं है तो हमको अपयश मिल सकता है। तो वी नीड टू हैव दैट। इसमें गार्गल्स बताए गए हैं, ये मैंने बदला है। आयुर्वेद रस धातु के लिए बातें बताई है कि वो जो है प्लाज्मा है, लिम्फ है और इंटेस्टिनल फ्लूइड है। अहरह गच्छति इति रसः, सभी धातुओं का मूल रस धातु है, ये आचार्य ने बताया। यानी कि सभी धातु जहां से उत्पन्न होती है वहां पे रस धातु प्रेजेंट है। इतनी सामान्य बात समझ के अगर हम आगे चले और उसको कोई नाम ना देकर जो आचार्य ने समझा है उसी तरह ही समझे। जैसे अगर मैं ज्वर बोलती हूँ तो वो फीवर नहीं है, फीवर इज समथिंग वेरी डिफरेंट। उसी तरह राजयक्ष्मा बोलती हूँ तो वो ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस तो बहुत छोटा दर्द है भाई, ये तो राजयक्ष्मा, यक्ष्माणाम राजा रोग राट है। तो वो बिना समझे अगर हम उनको कोई ना कोई सिनोनिम देने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती है। और उसी तरह हम अगर बोलते हैं कि ये डायबिटीज है, ये हाइपरटेंशन है, नहीं, हाइपरटेंशन को हाइपरटेंशन ही रहने दे, उसको हम व्यान दृष्टि नहीं करते हैं। व्यान दृष्टि बहुत अलग है, उसकी ट्रीटमेंट भी अलग है। यहाँ पे एक पॉइंट मुझे देना है कि फ्यूमिगेशन जो है उसके अंदर जो ड्रग्स यूज होती है वो चव, तल, वचा, पिल्व, घृत, सरसव, गाय का गोबर है, गुकुलू और कपूर, इतने ड्रग्स अगर हम सम्मिलित करके फ्यूमिगेशन करें तो हम लोगों ने देखा है कि सिर्फ माइक्रोब्स नहीं, फंगस भी चली जाती है। और ये वेटरनरी में भी अभी लंपी वायरस निकला तो वेटरनरी में भी इन लोगों ने देखा कि वचा उन लोगों ने यूज नहीं की और उसकी जगह उन्होंने नींब पत्र यूज किए, और लंपी वायरस जो है उसमें से पशु वापस आए। उसी तरह यहाँ पे जो बताया गया है कि आई बॉल जो है, आई बॉल के अंदर इन्फेक्शन लगा है, फंगल इन्फेक्शन, और ओरल कैविटी में भी इन्फेक्शन लगा है, तो ये जो है वो इन्फेक्शन फंगल है। उसमें अगर हम धूपन करते हैं तो इससे रिजल्ट मिलता है। ओटाइटिस मीडिया में भी हम लोगों ने देखा है कि उसको धूपन करते थे तो धूपन से ओटाइटिस मीडिया में रिजल्ट मिला था। नो ओरल मेडिसिन, सिर्फ लोकल मेडिसिन से रिजल्ट मिलता है, और इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। धूपन चिकित्सा ऐसा करके बताया गया है। मैडम थोड़ा टाइम, 1 Phases. घंटा हो गया। बस सिर्फ लास्ट 3 स्लाइड सर। पैलिएटिव केयर जो है उसमें बताया है एंड ऑफ लाइफ केयर, टर्मिनल केयर। तो उसमें करना क्या है, मैक्सिमाइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन के ऊपर रखा, वेंटिलेटर पे रखा, ये मशीन्स पे रखे, ये ठीक नहीं है। इसमें पेशेंट को हम पहले से ही समझा देते हैं कि आप जो है वो ज्ञापक और सत्ववान उनको बनाए तो वो मृत्यु से डरेंगे नहीं, और उस वक्त पैलिएटिव केयर जो है वो रिजल्ट देगी।
और पेशेंट जो है वो आराम से मृत्यु को प्राप्त कर पाएंगे। प्रत्याख्येय रोगी, कौन से जो रोगी है उनको हमें लेना ही नहीं है। जो राजद्रोही है, आसन्न मृत्यु उसका है, ये सब जो बातें हैं वो हमें इंद्रिय स्थान, चरक इंद्रिय स्थान में बहुत बढ़िया तरीके से बताई गई है। एक बात जो मदन सर ने बताई उसके बारे में बताना चाहती हूँ। आज मैसेज आया 7000 स्क्वायर यार्ड की गौशाला में जितना दूध उत्पन्न होता है उतना 0.7 स्क्वायर यार्ड लेबोरेटरी में उत्पन्न होता है, और वो मिल्क टेस्टी भी है, न्यूट्रिटिव भी है और लेस कॉस्ट का है। लेकिन क्या ये मिल्क जीवित है? अगर पानी की तरह ये दूध भी जीवित नहीं है तो वो हमें पोषण देने की क्षमता नहीं रखता है। इसलिए टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट एंड फैमिली with collaboration, values and ethics, roles and responsibilities, it's a team work, and Ayush is a team. Ayurveda leads it because Ayurveda is Indian system of medicine. Thank you everybody. Thank you very much. Thank you very much, sir. Akre ji, your comments, please. नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद आपका। अभी हम लोग मैडम पारुल जोशी जी को सुन रहे थे। आपने बल्कि एक बार आपको कह देना पड़ा कि समय का ख्याल रखिए, लेकिन एक्सक्लूसिवली अगर ये अकेली सिंगल स्पीकर भी हो तो शायद भी ये अपनी बात पूरी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इतना सारगर्भित और इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इनके पास है। कम से कम 8 से 9 पेशेंट्स पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया, और ये साबित करता है कि इन्होंने कितनी डीप कंसंट्रेशन के साथ में अपना छात्र जीवन बिताया, कितनी इनको सीखने की ललक थी, और आज ये कितनी प्राउड है कि इनके पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनको फॉलो करते हैं। इन्होंने खुद अपने को मैडम प्रेमवती तिवारी जी से कि कुलज होने का जो दावा किया उससे हम तो गदगद हो गए। ये बिल्कुल सत्य है। हम अपने गुरुओं जी का उठना बैठना चलना बोलना, उनका लेक्चर डिलीवरी स्टाइल और उनका मरीज देखने का स्टाइल क्या नहीं जो हम लोग चाहते हैं हम कॉपी करने लगे। ये सत्य बात है। उसका अगर सूत्र भी पकड़ लिया तो बाकी तो वो आशीर्वाद देते ही रहते हैं। प्रत्यक्षता पृथ्वी पे हो चाहे न हो, ईमानदारी की बात है। प्रोफेसर शुक्ला जी का नाम लेके क्लासरूम में चले गए तो ये सोचना नहीं पड़ता था कि आज मैं पढ़ाना क्या है, और अगर पढ़ाना क्या है टॉपिक पता है तो आएगा कहाँ से मुझे नहीं पता, क्योंकि उनका एक ही वाक्य था, जब मैं चाहूंगा तुमको आने लगेगा। वो मैं कभी वो सेंटेंस भूल नहीं सकता हूँ, और मैं इस चीज का प्रत्यक्षीकरण मैडम पारुल जी के लेक्चर से देख पाया। बहुत ही अच्छा लगा। स्पेशली जो ड्राई लेवर की स्थिति बनी थी उसमें बिना किसी तरीके से और बिना सीजर के उन्होंने जात्यादि पोरिंग करा के और जो किया है वो मैचलेस था। शायद इथिकल कितना था नहीं था, लेकिन समय की वो मांग थी और उसको उन्होंने सर्वाइव कराया। ऐसे बहुत से रहस्य मैं तो कह चुका हूँ। मुझे क्या है वो गांधीनगर कहाँ मिलने आना पड़ेगा, तभी ये असली अनुभव शेयर हो पाएंगे। आपका मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। आप जीवंत उदाहरण होती जा रही हैं मैडम तिवारी जी की, और उन सब छात्राओं के लिए छात्रों के लिए जो आपसे प्रतिदिन के स्तर पर जो है लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you very much, sir. Now I would like to request Madan sir for his guidance and moderation. Pavan ji, please let us proceed. Parul ji ka presentation. Parul ji, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और you have also reminded us कि आज मोदी जी का बर्थडे है, तो हमारी सबसे we are wishing our Prime Minister Modi ji a very very happy 72nd birthday. Yes, sir. Thank you, Yes. Parul ji, for reminding us. Thank you. 17th September. Thank you also for sharing. आपके हर webinar, every presentation is wonderful because you introduce your personal experiences into this, and this is very very important for all of us who are listening, and we will be revisiting your recordings just to learn a little more. बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी। Thank you, sir. Thank you. Today means Modi ji is also Vishwakarma of shaping new India. New India.
So welcome. Thank you. Happy birthday to Modi ji. Modi ji. And Parul ji, you are also the one person who has introduced us to the Children's University, Gujarat. We haven't discussed this. I hope Pawan ji will bring up that in one of the future days. Ki children's health, Children's University, and the role for global health. Ji. Gujarat provides a model for all of us, and I hope that in future discussions this will also come up again. Kyunki kal jo webinar mein we had discussed this briefly ki for later life care we have to start teaching values very early, and I hope that we can come and visit this point also in future webinars. Pawanji will remind us again in one future event कि वो Children's University की बात कैसे ले आए इसके अंदर. धन्यवाद जी, हमारी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद. Before calling Patankar sahib, I would like to request all of you, sir, because audience is being decreased minute by minute. This is October, sir. Please guide me. On October 1st, International Day of Older Person, International Vegetarian Day, and World Smile Day. What should we choose, sir? Please guide. They're all, particularly number 1 and 2, Pawan ji, हमारी तरफ से पहली और दूसरी वाली चीज बहुत शानदार. बाकी तो we are always smiling, so that is not an issue. So, right from smiling to laughing. And second is, sir, also unique, World No Alcohol Day. And October 3rd is World Temperance Day. That has also same meaning, because temperance is a movement against alcohol. Very. Both are similar. October 4th. Yes, please. मृणाल जी से ये निवेदन है कि हम वेजिटेरियन डे उठाएं इसकी. मृणाल जी नमस्कार, थैंक यू फॉर सजेस्टिंग दिस. नमस्कार सर. नमस्कार जी. नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार. मृणाल जी, on October 4th World Habitat Day. हाँ जी, बढ़िया. On October 5th World Teachers Day. We have already celebrated Indian Teachers Day. But if we can get international teachers, definitely we will be celebrating World Teachers Day also. On October 6th, World Cerebral Palsy Day, Random Acts of Poetry Day, and National Poetry Day, UK and Ireland. So whether we should celebrate Cerebral Palsy or Poetry Day? Pawan ji, I know you will say दूसरी और तीसरी वाली. आपकी. Because we are celebrating on 21st Alzheimer's Day. अच्छा. This 21st. Acha. On October 7th, World College Radio Day. Just for your kind information, sir, I have been appointed along with the professorship as head of MGU Radio Udan. This we have our university's radio. I will send to all link of the radio, that is internet radio, and we are developing content and audience for that. That is our MGU, Mansarovar Global University Radio Udan. And Pawan and Udan. Only Pawan can do it. So only Pawan can do it. From yesterday, I am heading this. October 9, Universal Music Day. And World Hospice and Palliative Care. Sabash. On that day, just now we have celebrated, we have conducted webinar on palliative care just yesterday. So please guide me, Universal, whether we should conduct webinar on music or palliative care. Please guide. I would like to have your blessings on the point. Music will be better, in my opinion. Sabash. Music. And October 10th, again, World Mental Health Day. Very nice theme, Pawanji. Bahut badhiya. On October 11th, I would like to request Parul ji
International Day To of guide us, Girl. International Day of the Girl Child. What should be their topic? Please guide me. And on October 12th, World Arthritis Day. On October 13th, World Thrombosis Day. On October 14th, World Sight Day. I am confused in October 16th, where World Anesthesia Day, World Food Day, Global Dignity Day, Right. World Restart a Heart Day, World Spine Day, and World Singing Day. Please guide. I am just putting that matter forward where I am confused, sir. So please bless. Please. All are important. 12, 10 or 12 days were there. I have selected only 6. And everything is related with us. Global Dignity, 116. Global Dignity Day. We have one. Global Dignity. Please guide. I will write to you all. I am going to send you all. I think last year we celebrated the same day. Actually, on every day there is a more than 1, 2, 3. Today itself it is a coastal clearing day. The TS Swachhata Divas. No, that's why I have not selected. I have deleted those, sir. I have deleted those. Yeah. Non-relevant, I have deleted. These are the relevant only. Relevant. What we can choose, this is up to us. On October 7th, World Trauma Day. Please make up your mind for guiding me on October 16. I am just reading out all the names. World Trauma Day. Trauma care in AYUSH. It can be also the good subject. On October 18th, World Menopause Day. On 20, Osteoporosis Day. We have celebrated Statistics Day. On 21st, World Iodine Deficiency Day. And on October 21st or 21st, sorry, Sri Dhanvantari Jayanti. Grand program will be there, sir. On October 24, again we can delete polio because polio is not there. World Meningitis Day. So in these 2 months on brain, I hope 3 or 4 webinars can be done. On October 25, International Artists Day, International Dolphins Awareness Day, MDS World Awareness Day, World Spine, Bifida and Hydrocephalus Day, again brain. Just see the celebration, sir. On 27th, what? Please. Sir, also Lakshmi Pujan Day is also there. It is a Deepavali Day. 24 or 25, sir? 25th of October, I think. Because Dhanvantari Jayanti, you told. 21. Dhanvantari Jayanti is on 22nd. 22nd? Saturday. Yes, Saturday. Yeah. Okay, then it can be 22nd, 24th. 3rd. Then 24th Diwali will be there. 24th. Okay. And so we will not keep any webinar on Diwali. That is a grand festival everywhere. October 27, World Occupational Therapy Day. October 28, International Animation Day. I would like to request all the animators for Ayurveda to join this. October 29, World Stroke Day, World Psoriasis Day, World Internet Day. What should we select? Internet Day is need of the hour. I think so. What, sir? Internet Day is need of the hour. I think so. Internet Day. Out of Internet, we are celebrating our webinars. So it is more important. Yes. World Audio Drama Day. And then on October 31st, World Cities Day, World Saving Day, that is not with us. Reformation Day. Reformation. Ayurveda reforms. Yes. So now please guide me. I am going to send you this all. Please guide me. Thank you. I am confused in 3-4 similar days because all are of relevance. That's why I would like to have your blessings, topic and guidance, everything. Along with
recommendation for speakers, which Badan sir, Patankar sir, Vishnu Prasad Sharma ji, everybody has left, sir, recommending. You What are is getting my it crime approved and what is by my the apology, house. I don't. You are getting with the house. Your I see. No, I am thinking that due to this long series of webinar, I hope my guardians are under fatigue. That's why not recommending any expert, neither No, no, no. Patankar, No, neither no, no. Patankar. Not at all like that. बिल्कुल नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है. Please, sir, I am हाँ alone. बाबा. Don't be fatigued. नहीं तो Don't, ये please. प्लीज वर्ड निकाल दो. हाँ. Acha. So now I would like to request Dr. Patankar Sahib, Sukshma Aushadhi practitioner, renowned practitioner in Mumbai. Welcome, sir. Welcome. धन्यवाद. अभी पारुल जी का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा और उसे कुछ थोड़ा सा एक सेकंड साइड ऑफ द कॉइन उसके बारे में मैं जरा थोड़ा कहूंगा कि आयुर्वेद जो है वो साइंस ऑफ लाइफ और लाइफ ऑफ साइंस ऐसा है. उसके बारे में कुछ मिसकंसेप्ट जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन और फॉर्मुलेशन के बारे में, उसके तरफ भी ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है पेशेंट के सेफ्टी के लिए. क्योंकि हमारे ग्रंथकारों ने जो भी दवाइयाँ बनाने का प्रोसीजर जो बताई गई है वो ऐसे ही नहीं लिखी गई है. कि फॉर एग्जांपल कि त्रिभुवन कीर्ति में कौन से ड्रग कौन से सीक्वेंस में आने चाहिए वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. इंक्लूडिंग उसकी जो भावना दी जाती है उसका भी जो इम्पोर्टेंस है वो भी ध्यान में रख करके पेशेंट के सेफ्टी के लिए. क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन सेफ रहते ऐसा हर एक का एक मिसकंसेप्ट होता है. तो ऐसा नहीं है. अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या फॉर्मुलेशन में अगर कुछ गड़बड़ है तो दैट कैन कॉज हैजार्ड्स. तो इसके लिए उसके बारे में भी ध्यान देना हमको भी ज़्यादा जरूरी है. और इसके बारे में अवेयरनेस आयुर्वेद के बारे में ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. मैंने जिनसे आयुर्वेद तो सीखा पर एलोपैथी भी जिनसे सीखा वो थे डॉक्टर के राममूर्ति. ही वॉज रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट वो समय के. तो उनका ऐसा कहना था कि आयुर्वेद ये कंप्लीट साइंस है. तो जब भी मैंने मेरी प्रैक्टिस शुरू करने के लिए बारे में उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि तुम्हें आयुर्वेदिक ही प्रैक्टिस करनी है. और सेकंड थिंग कि आयुर्वेद इतना प्रिसाइज है कि मिनिमम मेडिसिन विद मैक्सिमम रिजल्ट्स ये आप आयुर्वेद के माध्यम से जरूर कर सकते हो. कि जो एलोपैथी में हमारे जो आजकल के डॉक्टर है, जैसा पारुल मैडम ने भी कहा कि 10-10, 20-20 दवाइयाँ लिखते हैं. मेरा ऐसा मानना है कि जो भी प्रोफेसर्स या जो भी ओपीडी में बैठने वाले हैं कॉलेज के, उनके हाथ में जब भी पेन आता है तो मेडिसिन एकदम बहुत ही लो कॉस्ट में मिलते हैं. तो सेम टाइप का ऐसे 4-4, 5-5 मेडिसिन लिखे जाते हैं कि जो पेशेंट के सेफ्टी के लिए अच्छे नहीं है और उनको मेडिसिन के बारे में थोड़ी सी घृणता भी आने लगती है कि हम लोग कितना मेडिसिन खाए. तो इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं सबको कहता हूँ कि पित्त व्याधि का पेशेंट है तो उसके लिए अपना सूचेकर भी लिखा जाता है, कामदुधा भी लिखा जाता है, लघु सूचेकर भी लिखा जाता है, प्रवाल भस्म भी लिखा जाता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये करने से पेशेंट की सेफ्टी के तरफ या पेशेंट जो कंटाल जाता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसा मुझे लगता है. सेकंड थिंग कि उसका जो पथ्य है वो भी एक सेफ्टी की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए. क्योंकि उसकी जो प्रकृति है या उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिसाब से हर एक का पथ्य बदलता है. तो उसके लिए भी समय देना ये भी एक पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐसा मेरा मानना है. और ऐसे मैंने पेशेंट देखे भी है. क्योंकि सिर्फ पेशेंट को अगर पथ्य अच्छी तरह से बताया जाए तो पेशेंट उसमें बहुत उसको रिलीफ मिल सकता है. बाद में कि हर वैद्य को हर एक जो प्रिस्क्राइब करेंगे जो भी मेडिसिन उसके जो डोसेस है उसका भी मालूमात अच्छी तरह से होना ये भी जरूरी है. मतलब कि फॉर एग्जांपल की दवाइयाँ जो है अपने इसमें 11 अलग अलग औषधि सेवन काल है. तो वो भी ग्रंथकारों ने ऐसे ही नहीं लिख के रखे हैं. उसके पीछे कोई तो लॉजिक या कोई तो साइंटिफिक रीजंस है. वही हिसाब से अगर दवाई दी जाए
तो जैसा मैंने कहा कि मिनिमम मेडिसिन विद मैक्सिमम रिजल्ट्स, ये हम लोग जरूर कह सकते हैं। बाद में आजकल जो एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, उसमें जो गलत गलत एडवर्टाइजमेंट आती है कि फॉर एग्जांपल कि अर्जुन के जो बॉटल रहती है उसके बाजू में हार्ट का चित्र दिखाया जाता है, तो उसके लिए हर एक हार्ट कंडीशन में अर्जुन चलता है। और ये मेरी बात, मैंने जिनसे एलोपैथी का ज्ञान लिया, उन्होंने मुझे कहा कि आफ्टर प्रैक्टिस ऑफ 40 ईयर्स मुझे आयुर्वेद सीखना है। तो मैंने उनसे कहा कि अरे आयुर्वेद क्यों सीखना है? तो बोले मेरे पास पेशेंट आते हैं और हमने ये दवाई ली और हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो आयुर्वेद का जो रसविधि विभाग है वो ध्यान में रख करके ही मेडिकेशन जो है वो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में कि जो हमारी दिनचर्या और ऋतुचर्या, डेली और सीजनल रेजिम, उसका भी इम्पोर्टेंस जो है वो सेफ्टी के हिसाब से उनको समझाना जरूरी रहता है। मतलब दवाई दे देंगे और अगर ये नहीं समझाएंगे तो वो पेशेंट को ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि जब भी आजकल के नए जो यंग जनरेशन है उसमें जो इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं, उनमें वो ज़्यादातर इंग्लिश या ब्रॉयलर चिकन, वो एक इतना डेंजरस ये है खाना कि वो बंद कर देने से, मेरे पास ऐसे 4 पेशेंट्स है, लिटरली वो विदाउट अ सिंगल मेडिसिन वो औरत तीसरे या चौथे महीने में कंसीव हो जाती है। तो ये भी बातें हर एक पेशेंट को और समाज में हमको परकोलेट करने की जरूरत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ही हम लोग अच्छे वैद्य बन सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए प्रकृति के हिसाब से भी उनको सलाह देना, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा पारुल मैडम ने कहा और शास्त्र में भी कहा गया है कि अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हर एक शास्त्र के वो भी मालूम होना जरूरी है, क्योंकि मैं ये भी ठीक कर सकता हूँ वो भी ठीक कर सकता हूँ नहीं, तो उसके बारे में भी हम लोगों को पेशेंट को भी बताना और उसको अच्छी तरह से गाइड करना। आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, उसका भी इम्पोर्टेंस है क्या? क्योंकि जब भी टेस्ट किए जाते हैं तभी रिपोर्ट्स में 99% कुछ भी नहीं आता है, या आजकल के रिपोर्ट्स में ऐसा भी देखा गया है कि फॉर एग्जांपल अगर फास्टिंग शुगर 120 नॉर्मल है या जो रेंज है वो 120 तक चलता है, अगर वो 122 भी हो गया तो उसको हाईलाइट किया जाता है और उसके लिए पेशेंट को मेडिसिन भी शुरू किए जाते हैं। ऐसे भी पेशेंट्स देखे। तो इनके सेफ्टी के लिए हमको जो उनको पथ्य है या डेली और सीजनल रेजिम वो समझाना ज़्यादा जरूरी है। बाद में जो अलग अलग ट्रीटमेंट की मोडालिटीज है, आजकल आयुर्वेद में पंचकर्म, ये एक बहुत ही सॉरी टू से कि फैड के जैसा हो गया है कि हर एक के लिए पंचकर्म जरूरी है। तो सचमुच वो इम्पोर्टेंस है क्या या उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये पहले वैद्य को मालूम रहना चाहिए और बाद में वो पेशेंट को समझाना चाहिए। शमन चिकित्सा के बारे में भी वैसा ही है कि कहाँ पे शमन रोक करके शोधन करना है, ये भी एक पेशेंट के सेफ्टी के लिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे जो चतुष्पाद है, क्योंकि जो वैद्य है उसके बारे में मैं कहूँगा, बाकी तो पारुल मैडम ने कह दिया कि ही मस्ट बी ए गुड लिसनर। वो सब पेशेंट की बातें सुनने के अधीन होना चाहिए। ही मस्ट बी ए गुड काउंसिलर, उसको काउंसिलिंग अच्छा आना चाहिए। बाद में ही मस्ट बी ए गुड प्रैक्टिशनर एंड गुड, उसको मेडिकेशन जो है वो प्रॉपरली आना चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस ये जो है, ये मैंने जैसा कहा कि वी कैन प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस फॉर द पेशेंट सेफ्टी, ये इतना मैं जरूर कहूँगा। एंड कि जैसा मैंने कहा कि पब्लिक अवेयरनेस, इसके बारे में ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इतना ही कह करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी के बारे में ये जो बातें हैं जो मेरे मन में आई वो मैंने आपके सामने रखी। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you very much, sir. Thank you very much, Madan sir. Rajan ji, delight to see you. काफी दिनों के बाद. Thank you so much. You have touched on very, very important points, Mohanji, and it complements very well पारुल जी ने जो बताया, काफी चीज. इसकी एक छोटा सा सवाल जी, you don't need to answer now, बाद में,
कि वो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग की तरफ, this point that the day that the theme that Pavanji has chosen is also to highlight the need for some change in our training for the students also. Parul ji ki jo baat, that is so touching, that all the fine details, jo tel ki baat jo bataya, jo Agnihotri ji ne kha, these are very subtle things, presence of mind. Fatafat, kaise, how to think of very quickly of an answer. और वो जो अग्निहोत्री जी ने जो बताया comes from your guru, from your teachers. वो कैसे लाएं वापस? We will keep that point for our discussion. And you are a very practical person. We will keep this point, Ji, teaching safety. I think we will listen to Mrunal ji, and then we will come back to discuss one or two of these points. Education के अंदर कैसे ले आए? I think अग्निहोत्री जी की तरफ से भी लेंगे थोड़ा सा इसकी तरफ सोच. मृणाल जी नमस्कार. मृणाल जी नमस्कार सर. नमस्कार जी, प्रणाम जी. Very happy, Mrunal ji, very happy to see you here. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you sir, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद for joining us today. Thank you sir. ये जो हमने I intentionally mentioned this, ये students की तरफ से वो कैसे लाए practical aspects, वो confidence, and I like पारुल जी की comment की क्लास 40 जनों की क्लास के अंदर कम से कम 35 आजकल है जिनकी मन में पूरा सोच है कि आयुर्वेद ही करना. ये तो बहुत बड़ी चीज है. वेरी वेरी वंडरफुल थिंग. आपसे भी सुनाई जी थोड़ा इसके बारे में. श्योर सर. सर एक्चुअल में जो अभी का ट्रेंड चल रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली एलोपैथी के तरफ ही है ना, सबका झुकाव रहता है. और एक सेकेंडरी थिंग, जैसे बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर में, मैंने एक देखा है कि बच्चों का एक ही रहता है कि हमें एमबीबीएस नहीं मिला, बीडीएस नहीं मिला, इसलिए हम लोग आयुर्वेद कर रहे हैं, या घर वालों ने डाल दिया इसलिए कर रहे हैं. बट दे शुड हैव फेथ कि आयुर्वेद क्या कर सकता है. ऐसे बहुत से कम घर है कि जहाँ पे आयुर्वेद प्रैक्टिस की जाती है, या फिर उनको पता है कि, या फिर उनके घर में किसी ने तो भी लिया है. और मोस्टली जो कंबाइंड फैमिलीज है, नॉट न्यूक्लियर फैमिलीज, कंबाइंड फैमिलीज है, तो उनके दादा दादी ये मोस्ट प्रोबेबली टुवर्ड्स मींस उनका है थोड़ा सा झुकाव रहता है कि आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करें, या वो लोग जनरली कुछ भी हो जाए, जैसे हम लोग कहते हैं दादी माँ का बटवा, एक कहावत है इधर, कुछ भी हो जाए तो दादी माँ के नुस्खे या दादी माँ का बटवा. तो इस टाइप के जिनके घर में ओल्ड एज पर्सन है, तो वहां पे कुछ ना कुछ रेमेडीज, होम रेमेडीज वगैरह यूज की जाती है, जिसके वजह से जो आजकल की जनरेशन है उनको थोड़ा कुछ पता रहता है. वरना मैंने अपने यहाँ पे देखा है, मेरे कॉलेज में तो बच्चों को सादा तुलसी का पौधा भी, बहुत से लड़के या लड़कियां, उनको तुलसी का पौधा नहीं पता कि तुलसी कैसे होती है. तो यहाँ तक के है. तो हम लोगों को है कि अगर सोसाइटी में हम लोग ये शुरू कर दे कि सोसाइटी में भी पता चले, जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक ये किया था कि हर घर आयुर्वेद, हर घर आयुष. तो वैसे टाइप से अगर हम लोग चले तो बच्चों को भी आजकल अवेयरनेस आएगा, उनको भी पता चलेगा. बेसिकली थैंक्स टू कोविड के अभी इसमें जैसे आयुष क्वाथ है, या फिर जो आयुष की रेजिम्स है जो फोकस की गई कि संशमनिवटी, ये कुछ चीजें बच्चों को भी अभी पता चल गई है कि ड्यू टू कोविड. तो ये ड्यू टू कोविड ना हो के अभी अगर सभी फैमिलीज में ऐसा चले तो हम लोग ले जा सकते हैं आयुर्वेद को एक ग्लोबलाइज प्लेटफॉर्म पे. मृणाल जी कट गया आपका आवाज. ओके, नहीं हो गया है सर, वो अच्छा ग्लोबल ठीक है. प्लेटफॉर्म पे हम लोग ले जा सकते हैं. थैंक यू जी. आपसे भी सुने थोड़ा इसके बारे में, पेशेंट सेफ्टी के बारे में अगर. ओह श्योर सर. स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सर मैं. थैंक यू जी. ओके. Mrunal ji, we are additionally happy क्योंकि your interests are so wide. आपको ज्योतिष के भी बारे में पता और अलग अलग चीज. ये this is what our young generation must appreciate. You can also enjoy. Yes, we can enjoy sir every field.
सर हम लोग देखते हैं पेशेंट सेफ्टी के बारे में, अभी हम लोगों ने पारुल मैडम से सुना, पाटनकर सर से सुना। मोस्ट प्रोबेबली जब हम लोग पेशेंट सेफ्टी की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हुज सेफ्टी, प्लेस ऑफ सेफ्टी एंड राइट, सेफ्टी ऑफ राइट्स। तो हुज सेफ्टी यानी यहाँ पे हम लोग पेशेंट सेफ्टी की तो बात करते हैं, लेकिन पेशेंट के साथ साथ में हमें चाहिए कि वी शुड सी द सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑल्सो, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, मिडवाइफरीज हो गई, वार्ड बॉयज या जो भी वहाँ पे हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, उनकी भी हमें सेफ्टी देखनी प्रायर है। क्योंकि जनरली जैसे हम लोग कहते हैं कुछ कुछ इन्फेक्शन, कुछ कुछ डिजीजेस है जो हाईली इन्फेक्शियस रहती है, या कुछ डिजीजेस ऐसी रहती है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग रहती है। तो ये हम किसी को फ्रॉम पेशेंट टू अदर पर्सन, और कोई और पर्सन कैरियर है तो उससे पेशेंट तक के ना आए, तो ये हमें फर्स्ट देखना है, फर्स्ट रूल आउट करना है, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना है। आजकल के हॉस्पिटल्स में क्लीनिंग की प्रैक्टिस होती है, सैनिटाइजेशन की प्रैक्टिस होती है, बट उससे भी परे कि अगर हम लोग देखें कि रूल आउट करें कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको हम लोग पेशेंट तक के एक्सेस उसका बैन कर दे, या पेशेंट तक के उसका एक्सेस नहीं रखें, तो हम लोग पेशेंट की भी सेफ्टी रख सकते हैं और वो पर्सन की भी। सेफ्टी ऑफ प्लेस, जहाँ पे हम लोग पेशेंट रखते हैं, सेफ्टी ऑफ प्लेस अगर हम लोग देखें तो आयुर्वेद में इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। कि जैसे अगर हमें सूतिकागार बनाना है तो सूतिकागार बनाने के लिए उन्होंने बताया कि स्पेसिफिक ड्रग से ही हमें ना बेड बनाना है। सूतिकागार को अगर फ्यूमिगेट करना है तो रक्षोघ्न गण की जो द्रव्य है, विडंग हो गया, गुगुलू हो गया, इनसे फ्यूमिगेट करना है। तो ये सब चीजें सेफ्टी ऑफ प्लेस, ये उस जमाने से चली आ रही है, वेदों के जमाने से या वेदों के पहले से। और आज भी इसे देखा जा सकता है कि जैसे ऑपरेशन थिएटर्स है उसको हम लोग फ्यूमिगेट करते हैं। साथ में ये जो फ्यूमिगेशन है, अगर हम लोग ये प्रैक्टिस भी ला दे कि जैसे कोई पेशेंट है वो डिस्चार्ज होता है तो पहले उसका बेड, उसका रूम पहले फ्यूमिगेट किया जाएगा, और फ्यूमिगेट करने के कुछ समय के बाद में ही हम लोग दूसरे पेशेंट को अलॉट करेंगे। तो इससे भी हम लोग बहुत से जगह के इन्फेक्शन या बहुत से डिजीजेस हम लोग कम कर सकते हैं, जो हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीजेस कहते हैं, उनको भी हम लोग इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। सेफ्टी ऑफ राइट्स, सम डब्ल्यूएचओ की तरफ से उन्होंने पेशेंट की सेफ्टी के लिए बहुत से राइट्स, बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं कि पेशेंट के लिए जो फॉलो करने चाहिए, और जब भी हॉस्पिटल्स को परमिशन मिलती है तो वो हॉस्पिटल्स में सारे के रूल्स और राइट्स चेकआउट किए जाते हैं कि वो पेशेंट की तरफ से वो सेफ रहे या पेशेंट के लिए सेफ रहे। ना अगर हम लोग सेफ्टी की बात करते हैं तो व्हाट व्हाट इज सेफ्टी? तो अगर देखें तो सेफ्टी में एस स्टैंड्स फॉर सेंस द एरर, कि जो भी एरर है, जैसे हम लोग सिंपल एक बीपी ले रहे हैं, बीपी का अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर नहीं है तो हमें बीपी की रीडिंग जो है वो इनकरेक्ट आएगी, और यही इनकरेक्ट जो रीडिंग है ये हमें इनकरेक्ट प्रिजम्पशंस देगी, और जिसके वजह से पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग या पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट, ए फॉर एक्ट टू प्रिवेंट इट। एक्ट टू प्रिवेंट यानी ये जो एरर है इसको प्रिवेंट करने का एक्ट, कि हम लोग कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एफ फॉर फॉलो सेफ्टी गाइडलाइन। हमें जितनी भी सेफ्टी गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ या अकॉर्डिंग टू एन डीजीसीआई जो मिलती है, या फिर हमारे मंत्रालय से या आयुष के मिनिस्ट्री से जो हमें मिलती है, वो हमें फॉलो करनी है। या फिर हमारे बुक्स में भी अगर हम लोग देखते हैं संहिताओं में चतुष्पाद के लिए बताया गया कि चतुष्पाद कैसे चाहिए, राजहर वैद्य के बारे में बताया, अलग अलग टाइप के वैद्य बताए हैं, तो ये हमें फॉलो करना चाहिए। फिर ड्रग कलेक्शन, ड्रग स्टोरेज, ये सब प्रैक्टिसेस बताई गई है, तो इनको हमें फॉलो करना चाहिए कि जिससे हम लोग सेफ्टी की तरफ मूव हो सके। ई फॉर इंक्वायर इनटू एक्सीडेंट्स और डेथ। सो अगर कोई एक्सीडेंट होता है या डेथ होती है, उसको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, उसे हम लोगों को उसका इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि हाउ दिस डेथ हैज ऑकर्ड, ड्यू टू द अनसेफ प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस, या किसी इन्फेक्शन, एक्वायर्ड इन्फेक्शन की वजह से, या किसी ड्रग के डोज की वजह से। यहाँ पे एक है कि मैंने अभी रिसेंटली देखा है, एक 2 मंथ्स बैक एक पेशेंट था हमारे हॉस्पिटल का, उसे सल्फा ड्रग से एलर्जी, कभी उसने रिपोर्ट नहीं की थी, बट हमारा जो गंधक रसायन है, गंधक रसायन देने के वजह से उसके टोटल बॉडी पे स्वेलिंग आ गई थी, और ये स्वेलिंग 15 डेज तक के चली, और 15 डेज के बाद में धीरे धीरे उतरना शुरू हुआ। तो यहाँ पे रूल आउट है कि हो सकता है कि
वो जो गंधक रसायन था वो प्रॉपरली, जो गंधक है उसका शोधन नहीं किया गया होगा, या जो गंधक रसायन प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू हमारे ऑथेंटिक वे से बना नहीं होगा। और दूसरी बात की, पेशेंट ने भी हमें बताया नहीं कि उसको सल्फा ड्रग है, और डॉक्टर ने भी ये इवैल्यूएट नहीं किया कि उसे सल्फा ड्रग एलर्जी है कि नहीं है। ये ऐसी कंडीशन में हमें चाहिए कि हम लोग थोड़े अमाउंट में उसको देखे पेशेंट को, अगर उसे कुछ एलर्जी होती है तो हमें वहीं पे रुकना है। कि टेक अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स। अगर जैसे अभी ये गंधक रसायन का इवेंट था, अगर ऐसे इवेंट ऑकर होता है तो हमें अप्रोप्रिएट जो मेजर्स है, कि जैसे तुरंत ही गंधक रसायन बंद कर देना है, तुरंत जो भी मेडिकेशन है वो बंद करके हमें उसका रेमेडियल मेजर्स, उसका एंटीडोट, या फिर उसके लिए हम लोग जो हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह है वो करना चाहिए। और वाई फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे योर यानी डॉक्टर्स या जो मेडिकल प्रोफेशन है या सोसाइटी, तो किसी की भी है कि जो पेशेंट के कांटेक्ट में रहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट दैट। आजकल फार्माकोविजिलेंस, इवन आयुष में भी फार्माकोविजिलेंस शुरू किया है गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, कि जो भी हमारे यहाँ पे एडीआरस होते हैं, ऐसे ही होते हैं, उसको हमें तुरंत रिपोर्ट करना है, जिसके वजह से हम लोग पेशेंट सेफ्टी फर्स्ट, ये हमारा मोटो हम लोग वहां पे रख सकते हैं। तो वाई वी नीड सेफ्टी इन हॉस्पिटल? बिकॉज हॉस्पिटल में ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे पेशेंट्स रहते हैं कि जो जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती है, उन्हें ऑलरेडी हमें इंटेंसिव केयर देना होता है, तो उसके लिए हॉस्पिटल्स में सेफ्टी लगती है। इवन पेशेंट्स के लिए जो 24/7 जो लोग काम करते हैं, वो दिन रात जग के काम करने की वजह से उनकी भी कहीं ना कहीं पे इम्यूनिटी हैम्पर होती है, उनका भी मेंटल स्ट्रेस होता है, तो उन्हें भी हमें देखना है। देन जो पीपल हॉस्पिटल्स में एक्सेस करते हैं वो भी पेशेंट्स के रिलेटिव्स होते हैं, या पेशेंट के क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, जिनको पेशेंट के वजह से कुछ ना कुछ मेंटल इम्पैक्ट, या फिर उनकी भी उस वजह से ना खाने पीने का जो रहता है, कि अगर घर में पेशेंट है तो घर के लोगों का भी खाना पीना सब कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो इतने सारे लोग हैं, उन सभी की हमें सेफ्टी देखनी पड़ती है, इसलिए हॉस्पिटल्स की सेफ्टी फर्स्ट आती है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली अभी तक के मैंने देखे 3-4 इंसिडेंट्स की हॉस्पिटल में नेग्लिजेंस की वजह से आग लग गई, जिस आग की वजह से 13-14 बच्चे कहीं पे जल गए, और कहीं पे ना जो आईसीयू में पेशेंट्स एडमिट थे उनकी डेथ हो गई ड्यू टू बर्न। सो ये सब चीजें होती है। अगर ये सब चीजें हम लोग प्रॉपरली रूल आउट करें, रेगुलर चेकअप्स रखे हॉस्पिटल्स में, ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट्स का, ईच एंड एवरी वहाँ के ना प्रोसीजर्स का, तो हम लोग ये सब इंसिडेंट्स टाल सकते हैं। इवन आजकल अकॉर्डिंग टू द एनएबीएच की हॉस्पिटल्स में फायर अलार्म सिस्टम होनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम होनी चाहिए, बट ये सब चीजें होती है, बट इसका यूज नहीं होता है। तो यूज ना होने की वजह से ये सिस्टम कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती है। तो ये रूल आउट करना चाहिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट्स ने कि ये चीजें प्रॉपर फंक्शनिंग है कि नहीं, हर महीने में एक बार देखना चाहिए, या मॉक ड्रिल करनी चाहिए, जिसके वजह से पेशेंट, स्टाफ एंड पीपल, सोसाइटी, इन सब का वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स हम लोग ध्यान दे सकते हैं। और पेशेंट सेफ्टी, तो पेशेंट सेफ्टी क्यों हमें मस्ट है? सो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ की पेशेंट की सेफ्टी, पहले ऐसा होता था कि अगर हम लोग देखें मॉडर्न इरा, तो मॉडर्न इरा में जनरली पेशेंट्स को एज एन सिर्फ एक डमी करके देखा जाता था, एज एन रिसर्च ऑब्जेक्ट करके, एज एन गिनी पिक करके देखा जाता था, और उसके ऊपर कुछ भी मेडिसिन देके ट्रायल एंड एरर बेसिस पे उसे मेडिसिन देके देखा जाता था, और जब रिजल्ट मिलता है तो वही फिर आगे कंटिन्यू किया जाता था। जैसे हम लोग देख सकते हैं हेल्सिंक के कोड में है, या न्यूमरबर्ग के इसमें देख सकते हैं कि उस समय से कैसे थैलेसीमिया डिजास्टर है, ये सब चीजों से धीरे धीरे रूल आउट हुआ कि नहीं, कि जो मेडिसिन है उनका जो इम्प्रॉपर यूज है या ट्रायल एंड एरर है, ये कहीं ना कहीं हमें रोकना चाहिए। इसीलिए डब्ल्यूएचओ की तरफ से ये पेशेंट सेफ्टी फर्स्ट करके लॉन्च किया गया। अब पेशेंट सेफ्टी ओरिजिन कहाँ पे होता है? तो जनरली हिपोक्रेटिस की ओथ में ही है कि हम लोग पेशेंट की सेफ्टी पहले देखे जाएंगे, कि जो भी एलोपैथिक डॉक्टर्स है वो पहले ही जब पास आउट होते हैं तो उन्हें हिपोक्रेटिक ओथ दिया जाता है, कि जिसमें वी विल नेवर हार्म टू अवर पेशेंट दिया जाता है। सो ये जो ओरिजिन है ये यहाँ से तो हुआ है, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये इम्प्लीमेंटेशन 20th सेंचुरी में किया गया है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में
जहाँ पे हॉस्पिटल्स में माल प्रैक्टिस होती थी या फिर पेशेंट्स को कुछ भी दे के उनके ऊपर ट्रायल एंड एरर दे के मेडिसिन दिए जाते थे, उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया गया। ना अगर हम लोग करंट सिनारियो देखते हैं, करंट एनवायरनमेंट, तो करंट एनवायरनमेंट में जनरली जो रिपीटेड फेलर है सिस्टम का वो देखा जाता है कि कहीं पे भी हम लोग देखें हॉस्पिटल्स में तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता है। इवन अगर हम लोग इसका एक प्रॉपर देखा जाए तो कोविड में आया था कि रेमडेसिविर, कोई कहता था कि नहीं रेमडेसिविर देना है, कोई कहता था नहीं बुडासाविर देना है। तो प्रॉपर एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये फॉलो नहीं होता है, जिसके वजह से पता नहीं चलता है। इवन अगर हम लोग आयुर्वेद की बात करें तो हमारे इसमें हर एक पर्सन की प्रकृति बताई गई है, और उस प्रकृति के हिसाब से हमें काल देख के, वय देख के, बल देख के, दोष देख के फिर हमें मेडिसिन देना है। तो इसके ऊपर से अगर हम लोग ऐसी मेडिसिन देते हैं तब हम लोग पेशेंट्स की जो पेशेंट में अगर जो भी कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं उसे हम लोग कम कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में ये देखा नहीं जाता है। मॉडर्न मेडिसिन में सिर्फ डायरेक्टली देखा जाता है, इन्फेक्शन है एंटीबायोटिक्स देना है, फीवर है एंटीपायरेटिक देना है, पेन है एनाल्जेसिक देना है। सो ये करंट सिनारियो है जिसे हम लोगों को काउंटर एक्ट करना है। तो इसीलिए वहां पे उन्होंने पेशेंट सेफ्टी गोल दिए हैं। पेशेंट सेफ्टी गोल्स में उन्होंने बताया कि जैसे एक्यूरेसी ऑफ पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, कि निदान, इससे हम लोग कह सकते हैं कि निदान की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ डिजीज, एंड जो भी हम लोग पेशेंट के ऊपर टेस्ट करते हैं, लैबोरेटरिकल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उनका एनालिसिस करना। नेक्स्ट है इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द कैरियर्स। सो जो भी हमारा कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन प्रॉपर जो केयर गिवर्स होते हैं जैसे मिडवाइफरीज है, फिर देन वार्ड बॉय है, नर्सेस है, तो इनके साथ हमारा कम्युनिकेशन और उनका कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ प्रॉपर होना चाहिए। कि कहीं कहीं पे होता है कि डॉक्टर बता देता है नर्सेस को कि ये मेडिसिन देना है, नर्स हड़बड़ी में कुछ और दे बैठती है और उससे पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट की इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ यूजिंग मेडिकेशन। जनरली इंडिया में देखा है कि मोस्ट प्रॉब्ली मैक्सिमम ड्रग्स पेशेंट विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन जाके मार्केट से ले लेता है। फिर उसके कारण अगर कुछ उससे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस लेके घर में बैठता है, वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाए तो फिर डॉक्टर के पास जाके फिर ट्रीटमेंट लेता है। पर वहां पे भी जाके वो कभी कहता नहीं कि मैंने ओटीसी ड्रग लिए या काउंटर पे जाके मैंने ड्रग लिया। और इन्हीं ड्रग्स के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस है वो अनट्रीटेड होने की वजह से पेशेंट की कंडीशन और वर्सन हो सकती है। तो यहाँ पे हमें सेफ्टी मेडिकेशन यूजेस जो है वो इम्प्रूव करना है। देन लास्टली की जो रिस्क फैक्टर है एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन, उस रिस्क फैक्टर को हमें कम करना है। कि जैसे कि अगर हम लोग हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट है तो हमें वहां पे ना उसके जो रिलेटिव्स है उनको रिस्ट्रिक्ट करना है कि एक ही रिलेटिव आएगा पर डे और वही है ना हॉस्पिटल में रुकेगा, या फिर पेशेंट से मिलने के लिए हम लोग ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं करना है, या अगर पॉसिबल हो तो पेशेंट को बाहर से ही देखने के लिए अलाउ करना है। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो पेशेंट को होने वाला इन्फेक्शन है या पेशेंट से जो उसके रिलेटिव्स को होने वाला इन्फेक्शन है हम लोग उसको क्योर कर सकते हैं। ये तो मॉडर्न पर्सपेक्टिव हो गया कि पेशेंट सेफ्टी कैसे देखे। लेकिन अगर हम लोग आयुर्वेद देखते हैं, आयुर्वेदा व्यू, तो आयुर्वेद में बहुत वास्टली दिया है। हर जगह पे सबसे पहले पेशेंट की सेफ्टी ही देखी गई है और उसके बाद ही हर चीज, हर डायग्नोसिस, हर ट्रीटमेंट पॉइंट, हर प्रोसीजर्स आयुर्वेद में बताई गई है। और इवन हर प्रोसीजर्स को डिस्क्राइब करते समय उन्होंने पेशेंट सेफ्टी को रूल आउट करने के लिए बताया गया है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं आयुर्वेद में सबसे पहले बताया है कि आतुर से विकार प्रशमन। तो आतुर का विकार अगर प्रशमन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो पहले हम लोगों को स्वस्थ व्यक्ति है उनको अलग निकालना है, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ, उनके स्वास्थ्य को तो टिकाए रखना है। देन हमें आतुरों के विकार को देखना है। ये आतुर के विकार को कैसे देखेंगे, तो हम लोगों को पंचनिदान करके देखना है, षटक्रिया काल देखना है, देन दोष धातु मलों को देखना है, उसकी दशविध परीक्षा भाव देखना है। देन ये सब देख के बाद में उसको मेडिसिन देना है। तो मेडिसिन के लिए भी उन्होंने प्रॉपरली दिया है कि मेडिसिन कैसे देना है। यहीं पे मेडिसिन के लिए मेडिसिन की 4
पॉइंट्स बताए गए कि मेडिसिन कैसी चाहिए, मेडिसिन प्रॉपरली पोटेंट ड्रग चाहिए, पोटेंट ड्रग होने के बाद में वो बहुता योग्यता अनेकविध संपन्न, ऐसे बताया गया है कि वो संपन्न औषध हो, हर जगह पे अवेलेबल हो और उसके हम लोग अच्छे से कल्पनाएं कर सकते हैं। देन ड्रग यूसेज, प्रॉपर ड्रग यूसेज कैसे करना है। तो हम लोग जो मेडिसिन देते हैं या लेते हैं वो प्रॉपरली होनी चाहिए, यथा ऋतु यथा काल उसको कलेक्ट करना चाहिए। और फिर ऐसी जो यथा ऋतु यथा काल कलेक्ट की गई जो मेडिसिन है उसको प्रॉपरली प्रोसेस करके हम लोग पे पेशेंट पे यूज करते हैं। इसमें आचार्य चरक ने उनके विमान स्थान में एक बताया कि कैसे हम लोग ड्रग यूसेज कर सकते हैं, ड्रग का यूसेज कैसे कर सकते हैं। देन निदान, इसके लिए तो हम लोगों ने देखा है कि निदान कैसे, निदान करके ही हम लोग को मेडिसिन देनी है। अगर एंटायर एस्पेक्ट देखे, वेरियस एस्पेक्ट जो है मेडिसिन के या आयुर्वेदा के, तो उसमें सबसे पहले कि ड्रग आइडेंटिफिकेशन, ड्रग हम लोगों को कैसे ढूंढना है। तो आचार्य चरक ने बताया कि हम लोग जो ड्रग ढूंढते हैं या जो ड्रग हमें मेडिसिन के लिए लेना है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए, वो प्रॉपरली हम लोगों को जंगल में जाके देख लेना है। देखने के बाद में वो प्रशस्त भेषज है कि नहीं वो देखना है। यथा ऋतु यथा काल यथा देश यथा औषध हमें कलेक्ट करनी है। देन उसके बाद में हम लोग वो कलेक्ट करने के बाद में ड्रग की प्रॉपर कलेक्शन विधि बताई गई है कि प्रोसेस है पूरी ड्रग कलेक्शन की, वो प्रोसेस फॉलो करके फिर हमें ड्रग को कलेक्ट करना है और वो ड्रग कलेक्ट करने के बाद में हम लोग उसे प्रोसेस करते हैं, जिससे प्रोसेस करने के बाद में हम लोग उससे आसव है, अरिष्ट है, टैबलेट्स है, चूर्ण है, ये सब चीजें उससे बनाते हैं और यही बनाने के बाद में हम लोग पेशेंट्स को देते हैं। नेक्स्ट, इन सब मेडिसिन के अलावा भी आचार्य ने ऐसे कुछ चीजें बताई कि जो पेशेंट सेफ्टी के लिए भी फॉलो होती है और पर्सनल सेफ्टी के लिए, जैसे सद्व्रत, विविध प्रकार के ना उन्होंने एक्ट्स बताए हैं कि घर से निकलते समय कैसे रहना है, मॉर्निंग में उठने के बाद में कौन सी रिजिम करनी है, घर से बाहर जाते समय कैसे जाना चाहिए। तो ये जो सद्व्रत है अगर हम लोग आज फॉलो करेंगे तो इन सद्व्रत के वजह से ही हम लोग हमारी सेफ्टी और पेशेंट की सेफ्टी भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिनचर्या। अगर हम लोग दिनचर्या फॉलो करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा मेन मोटो है आयुर्वेद का, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, तो ये हम उससे गेन कर सकते हैं। लास्टली जो चिकित्सा चतुष्पाद हमारे इसमें बताए हैं, इन चिकित्सा चतुष्पादों को का वर्णन जो है वो मोस्ट पेशेंट की सेफ्टी के हिसाब से ही बताया गया है कि वैद्य कैसे चाहिए, वैद्य की प्रवृत्तियां क्या होती है, वैद्य के 4 गुण क्या है, द्रव्य के 4 गुण बताए गए हैं, रोगी के 4 गुण। अगर इनमें से अगर रोगी प्रॉपर नहीं है फिर भी हम लोग प्रॉपरली पेशेंट सेफ्टी नहीं कर सकते या हमारी ट्रीटमेंट सफल नहीं हो सकती है। उपस्था कैसा है, उपस्था यानी जो परिचारक होते हैं, नर्सेस होती है, तो वो भी कैसे चाहिए। इन सब चिकित्सा चतुष्पादों को लेकर ही हम लोग पेशेंट सेफ्टी देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। अगर हम लोग सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी के प्रिंसिपल देखे जाए तो सेफ मेडिकल एनवायरनमेंट, सर्जिकल एनवायरनमेंट, सर्जिकल सेफ्टी, देन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मैंने इसलिए मेंशन किया है कि अगर किसी हॉस्पिटल में प्रॉपर, अभी आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो प्रॉपर नहीं है, कहीं पे स्पार्क हो रहा है, कहीं पे फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है, तो इस वजह से आग लग सकती है या इस वजह से किसी को करंट लग सकता है, जिसके वजह से पेशेंट की डेथ या पेशेंट को परमानेंट डिसेबिलिटी आ सकती है। सैनिटेशन ऑफ ब्लड सेफ्टी, इन्फेक्शन, जो ब्लड, जहाँ पे ब्लड हैंडल होता है, पेशेंट का ब्लड कलेक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, तो इसके वजह से भी हम लोग पेशेंट्स को इन्फेक्शन ट्रांसफर कर सकते। तो यहाँ पे भी हमें सेफ मोड्स देखना है, यहाँ पे भी हमें सेफ्टी केयर मेजर्स लेने हैं। देन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस एंड लेबोरेटरिकल जो मटेरियल्स है उसका डिस्पोजेबल। आजकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने दिया है कि वेट जो वेस्ट है वो ग्रीन बैग एंड रेड बैग हॉस्पिटल्स में रखने के लिए बोला गया है, ग्रीन, रेड एंड येलो बैग। तो इसके वजह से हम लोग जो प्रॉपर डिस्पोजेबल है वो प्रॉपर जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज कर सकते हैं, कि ब्लड वेस्ट है उसको रेड बैग में ही डालना है, जो ड्राई वेस्ट है उसको हम लोग ग्रीन बैग में ही डालना है। तो इसके हिसाब से हम लोग वेस्ट, जो वहां से होने वाले इन्फेक्शंस है वेस्ट मटेरियल से, उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर हम लोग मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा एंड मॉडर्न साइंस, तो हम लोग अल्टीमेटली पेशेंट्स की सेफ्टी
देख सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। इवन आयुर्वेदा के कुछ फ्यूमिगेशंस है, इनको भी अभी प्रूव किया गया है कि वो 99% माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं पेशेंट सेफ्टी के बारे में बोल के स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनविटेशन। मृणाल जी बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. How very clearly you have touched on the key points, or you brought it all together in a very short space of time. The points, one or two points you have raised. एक तो है जी the patient safety based on prakriti aspects, that specificity जो राजन जी ने भी बताया. These are Yes, the sir. special aspects that are, आपने सही बताया कि those subtle aspects are not observed in contemporary modern medicine. And this is a big Yes, sir. opportunity for Ayurveda to help show new dimensions in safety aspects of human beings. Sir, 1 minute, sir. I forgot to tell one thing. Actually, modern science में तो प्रकृति वगैरह नहीं देखते, लेकिन आजकल जो एक मेडिसिन चल रहा है, जेनेटिक मेडिसिन, हाँ जी. तो जीन्स देख के फिर मेडिसिन दिया जा रहा है कि कौन से जीन के लिए कौन सा मेडिसिन प्रॉपर रहेगा. बट ये टू कॉस्टली है, टू मच कॉस्टली. और अगर हम लोग देखा जाए तो आयुर्वेद में जो प्रकृति है, तो हर एक की प्रकृति अलग और उसको दिए जाने वाली मेडिसिन भी टोटली डिफरेंट होती है. बिल्कुल जी. ये जो आपने सही बताया फार्माकोजीनोमिक्स करके वो जो नया चीज है, उसमें there are some opportunities, but I don't think it is, you're right in saying it will not scale. It may be possible for some parts of the world. It will Yes. It will certainly not be possible for the poorer nations of the world and the poorer people. वहाँ पे we need some other approach. Yes. इसमें मृणाल जी हमारी वो पिछले वाली क्वेश्चन, वो ट्रेनिंग की तरफ अगर देखो तो there is a need for a lot of attention to detail. Yes, sir. वो उसमें we appreciate that Ayurveda, जैसे Madam Parul ji ने जो बताया, that we have many aspects that we can prevent disease, maintain health, promote health. So if we could put that aside and only look at the curative side of, which is where our emphasis is right now when we talk about what we are discussing today, that curative side is the one that requires maximum skill, or that maximum skill comes from some apprenticeship. और जैसे राजन जी ने जो बताया या अग्निहोत्री जी ने जो बताया, पारुल मैडम ने जो बताया, there is a parampara somewhere, and this parampara concept is something very, very special. Or skills, soft skills have to be learned, and attention to detail is very important. अब ठीक है, learned Vaidya is always attentive to detail. But we are not able, I could be wrong, we are not able to communicate this to a large number of young students. I start with that observation. I could be wrong. शायद Rajan ji will elaborate. मगर आपसे सुने या अग्निहोत्री जी से भी सुने ये छोटी सी चीज कि learned Vaidya is very observant. सब कुछ, they understand so many factors. But उसको कैसे सिखाएं उसको, so safety becomes one aspect. A good Vaidya is always aware of many aspects. प्रकृति भी सोचता कि बल भी देखता कि so many factors they are keeping in mind. How to bring that awareness into our curriculum, into our education system, into our training, और कहाँ पे लाएं इसको कि 5.5 साल की कोर्स है, उसमें पूरा करिकुलम भी है और उसके बाद 1 या 1.5 साल का ट्रेनिंग, and that is too little to introduce people to these issues. So I just want to कि आपके मन में क्या है? Do you feel this is an issue? This is a
there is an issue. Yes, For me, I there is feel an issue. that actually, हाँ, क्योंकि अभी safety is a central part of that training. वहाँ पे वो training के अंदर आते हैं. yes, yes, I hope I'm correct. yes, sir, yes. मृणाल जी. यस सर. सर अभी जो जनरेशन अगर हम लोग देखते हैं तो उनका मोर प्रिटेंड रहता है कि बस टुवर्ड्स प्रैक्टिसिंग, उनका ये अटेंशन नहीं रहता कि हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस कैसे करें, या फिर हमें प्रॉपर हम लोग मेडिसिन या हम लोग पेशेंट को प्रॉपरली थ्रू अ प्रॉपर एकदम कैसे पेशेंट्स को ठीक कर सके. उनका एक रहता है कि अगर पेशेंट आता है बस उसे हमें ठीक करना है, बट वो ये एस्पेक्ट नहीं देखते कि हमें ऑल ओवर जो आयुर्वेद में बताया है या ऑल ओवर जो हमारे आचार्यों ने बता के गए हैं कि हमें कैसे रुग्ण परीक्षा करनी है, कैसे रोग परीक्षा करनी है, रोगी विनिश्चय कैसे करना है. तो ये सब चीजों पे आजकल बहुत कम ध्यान दिया जाता है. और यहीं पे है कि हम लोग अगर यहाँ पे अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो हम लोग एक अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे एक वैद्य निकाल सकते हैं सर वहाँ पे. मृणाल जी हमारे साथ है जी, राजन जी भी है, शर्मा जी भी है भोपाल से. yes. उनसे भी थोड़ा सुने जी. Sure, शर्मा जी sure. प्रणाम जी. हाँ, नमस्कार नमस्कार. राजन जी नमस्कार. हाँ, यस. राजन जी आपकी एक बात हमें आई रिमेम्बर ऑलवेज याद आते है कि वो पंचकर्मा वाली कहानी जी, कि कैसे वहां जाके फ्री ट्रेनिंग बट यू आर टॉट एक्सपीरियंस, यू नो, हाउ टू ब्रिंग दैट इनटू मॉडर्न डे. आज की जमाने में कैसे आज के जमाने में लाने के लिए मतलब कि आयुर्वेद में ऐसा समझता हूँ कि इट शुड बी टॉट बेड साइड. मतलब आजकल थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, पर फिर भी जो तरीके से बेड साइड मेडिसिन सिखाना चाहिए, कि हमारे नसीब से हमको सिखाने के लिए खुद माधव साने थे, माधव बाग के जो ओनर, बाद में वैद्य सरदेशमुख जी थे, बाद में हमने कुछ बातें अंतरकर जी से भी सीखी, और जो पुणे के योगो जोशी उनसे भी सीखी. तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना था. तो उनका कहना ऐसा रहता था कि जब भी कहीं पे भी जाओ तो तुम्हारे कान खुले रहने चाहिए. जो भी अच्छी चीजें आएगी उसको स्टोर करो और उसको इम्प्लीमेंट करो. और इम्प्लीमेंट करते समय कि जैसा आज का सब्जेक्ट है कि पेशेंट की सेफ्टी देख करके इम्प्लीमेंट करो. और हर एक पेशेंट आयुर्वेद की तरफ आजकल ऐसा बॉम्बे में दिखाई देता है या मेरे प्रैक्टिस में, मतलब पुअर पेशेंट्स भी आते हैं और जो पैसे वाले भी आते हैं, तो उनके तरफ देखते समय वो एज अ पेशेंट और उसको ट्रीट करना है हमें उसकी सेफ्टी देख करके, कि कुछ अगर पैसे वाला पेशेंट है तो उसको कुछ स्वर्ण कल्प वगैरह दिए जाए, और गरीब जो कि जो अफोर्ड नहीं करता है उनको भी दिए जाए. तो दैट इज नॉट करेक्ट वे. तो इसके लिए उसमें भी सेफ्टी देख करके वो करना चाहिए. और थोड़ा सा सॉरी टू से कि आजकल के जो भी प्रोफेसर्स है, तो ऐसा बीच में एक डिस्कशन हुआ था कि ये सब सेफ्टी सिखाने के लिए प्रोफेसर आजकल जो होते हैं वो एमडी करने के बाद आते हैं. तो एक बीच में ऐसा डिस्कशन हुआ था, यहाँ का जो एक धन्वंतरी करके मैगजीन था उसमें, कि टीचर्स को कम से कम 10 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर रहेगा तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. क्योंकि उसमें पेशेंट सेफ्टी की तरफ या क्या क्या उसमें उनको लैक्यूनाज आते हैं वो सब देख करके वो जब भी कोई ट्रीटमेंट करता है तो दैट इज सॉलिड एंड 100%. तो हिसाब से अगर बच्चों को सिखाया जाए तो बच्चे और भी ये तरफ आएंगे आयुर्वेद की. जी थैंक यू. थोड़ा शायद अगर शर्मा जी हो तो शर्मा जी से भी थोड़ा सुने जी. शर्मा जी प्रणाम जी. ये राजन जी, दिस इज टू डू विद द परंपरा. अब पवन जी हैज ऑर्गेनाइज्ड महाराष्ट्र परंपरा, वेस्ट बंगाल परंपरा, राजस्थान परंपरा, गुजरात परंपरा, केरल की परंपरा. अब सब में है जी
deep down safety of the patient is deep inside. Usko, how to bring it to a national level. Ki har ek ki jo tukde, the experience from different places, how to bring it and make a uniform protocol. I think this is a big project. It's a very important project for India. बारे में कोशिश की गई थी करीबन एक 20 साल पहले। यहाँ की जो एसोसिएशन है बीएमएस ग्रेजुएट एसोसिएशन, अच्छा जी, तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे सीनियर वैद्यों को एकत्रित किया था। तो उसमें ज्यादा तो नहीं, कुछ मध्य प्रदेश और कुछ गुजरात से थे और कुछ महाराष्ट्र से। तो उनके जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस थे और गोवा से भी थे एक दो, तो वो भी सुनने के बाद बहुत सारे जो वो समय के जो वैद्य थे वो बहुत सारे मोटिवेट हो गए थे ये सब सुनने के बाद। तो इसके लिए ऐसे मोटिवेटिव लेक्चर्स या लेक्चर सीरीज ये भी रखना जरूरी है। We are Rajan ji, we are looking to Pavan ji because now he is in an academic environment that we can bring this, we can make this happen. Oh, academic, we needed that academic background, that academic environment where we can discuss these matters and discuss. Oh, दूसरी चीज ये है जी, the power of the internet, and that is a very, very big thing. कि without traveling, we can discuss, we can distill, we can debate, and we can bring many points together. We can demonstrate also. So we are very fortunate that Pavan ji has now found a home in a very impressive university and with impressive resources. और Pavan ji, हमारी तरफ से सोच है कि it must be a global play, global presence जी. आपकी जो रेडियो वाली बात आपने जो बताया जी, I just want to share छोटी सी एक चीज, and it is called Radio Garden जी. अब Radio Garden is a very special radio internet में, it is a very special radio network. और उसमें ये देखो, I just want to show you यहाँ पे जी the power of Radio Garden. यहाँ बैठ के I can look at radio station in Indore. ये देखो जी, यहाँ इंग्लैंड में बैठ के I can today listen Indore में रेडियो में क्या चल रहा। और it is such a interactive ये वेबसाइट पूरा ग्लोब में दिखाई देगा, ये देखो जी। और इसका सिंपल नाम है रेडियो गार्डन, पूरा दुनिया का रेडियो स्टेशन, हिंदुस्तान के अलग अलग जगह के रेडियो स्टेशन और पूरा दुनिया का। और इसको you can move the globe, अलग अलग, we can go to different parts of the world, zoom in and listen to the radio. So this is the power of the internet. ये देखो यहाँ इटली पहुंच गया और स्पेन आ गया और इंग्लैंड आ गया रेडियो स्टेशन, देखो कितने रेडियो स्टेशन। तो आपकी वो रेडियो वाली चीज is a very powerful tool for the future, you know? And we will try and find a way to connect with this. So this is the power of this new technology. So I just want to convey, I just wanted to convey this up. You were thinking radio stations and radio is a big thing. We can reach the world, both. There are many ways we can leverage this small issue. I will leave this with you, Pavan ji. I think अगर शर्मा जी हो, we can listen शर्मा जी से थोड़ा सुने। और हमारे साथ है जी आज अभिषेक श्रीवास्तव जी। अभिषेक नमस्कार। If Abhishek is not available to address and Sharma ji is not available to address, I want to thank Pavan ji for bringing all of us together. And hello ji, thank you. This is Radio Udan from Mansarovar Global University. And we hope, Pavan ji, that with your presence there, we will be able to network with the rest of the world using radio as the medium and bring new thinking to
the whole world of linking with Madhya Pradesh, linking with Bhopal, linking with Ujjain, and bring some very creative ways for the future. Abhishek ji, namaskar. सर नमस्कार सर. अभिषेक जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. आप कहाँ से जुड़ रहे हो जी आज? सर रायपुर छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ से, भारी हो, शाबाश. ये शायद आप हमारे साथ कल भी थे. जी सर. अभिषेक जी, एक बार हम गए थे रायपुर. ये छोटी सी एक कहानी है. हम गए थे रायपुर और बस्तर जाने के लिए एक बार, जब अरे सर आपके चीफ मिनिस्टर साहब थे वहाँ, हमारी आयुर्वेद वेद जी. हाँ सर. रमन सिंह. हाँ, रमन सिंह जी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो हम गए थे रमन सिंह जी को रात को मिल के ऑफिस में. अगले दिन गए थे आपकी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में रायपुर में. नहीं, नॉट इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू शायद, द मेडिकल कॉलेज आपके. तो वहाँ बच्चों के साथ इंटरेक्शन में हम आयुर्वेद के बारे में थोड़ा बता के उनसे पूछा कि जो 100 जैसे लोग थे क्लास में, उन्हें पूछा इस आपके क्लास में, योगा क्लास में कितने लोगों को संस्कृतम आता. और आई वाज सरप्राइज्ड कि पूरा क्लास का हाथ ऊपर आया. ये कमाल. आई स्टिल रिमेम्बर, आई वाज सो अमेज्ड अग्निहोत्री जी कि मेडिकल कॉलेज में सारे बच्चे, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, कैन रीड संस्कृतम. संस्कृतम सर. ये कैसे अभिषेक जी, इसके बारे में थोड़ा बताना जी. ये कैसे आप लोग स्कूल में संस्कृतम पढ़ते हो? वेरी नाइस सर. हाँ, this was a very wonderful thing for me to see कि आपके रायपुर में मेडिकल कॉलेज, मॉडर्न मेडिसिन कॉलेज में all the children could understand संस्कृतम. इसके मतलब कम से कम छत्तीसगढ़ में तो we have that possibility कि बच्चों को अगर उस तरफ थोड़ा सा दिखाएं, चरक संहिता की तरफ अगर थोड़ा सा दिखाएं, कम से कम वहाँ तो we can enable this interaction between modern medicine and Charka Samhita. So thank you Abhishek ji, आज की thank you for being with us today. We are very happy कि आप रायपुर से you have joined us. Sir, very nice to see you sir. आज की प्रोग्राम के बारे में अगर आपके मन में कुछ हो तो we were happy to listen. No sir, always thank you sir. आपका इतना भी बहुत है सर. और दूसरी चीज, जयपुर में हम गए थे आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो है इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और उनके पास है जी one of the world's largest rice collection. Almost 22,000 varieties of rice is held. अलग-अलग medicinal rice, अलग-अलग type का rice varieties. उसका नाम है Richaria collection. So there are many themes where there is an interaction between what we are discussing, patient safety, food for patients, health of the patient, ecosystem, environment, biodiversity. और सारा कुछ आपके छत्तीसगढ़ में है और रायपुर में. So we are very grateful you have joined us today. जोड़ते रहिए जी. Please be part of our activity. What अगर आपकी आयुर्वेद की, I'm assuming you have a connection with Ayurved ji. Yes sir. Yes sir. You are teaching or you are researching or student? Practitioner है मैं, आयुर्वेद practitioner सर. अच्छा जी. आप पढ़े कहाँ जी आयुर्वेद? रायपुर का सर. अच्छा जी. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you for joining us. जोड़ते रहिए जी. If there is some very special topics you want to be discussed, जो पवन जी ने जो बताया आज प्रोग्राम अगले महीने का, उसमें अगर कुछ, if you can bring रायपुर से, if you can bring some Ved log, senior Ved, or even students to the program, we will be very grateful जी. Yes sir, sure sir. अगर रमन सिंह साहब को भी ले आए, वो
we will also be very happy for that. Sir, not sure for Raman Singh, sir, but I am ready to join, sir. Thank you, जी, बहुत बहुत. अब Pavan ji's telephone number है जी chat box में. I'm just putting Pavan ji's telephone number. Please connect with Pavan ji, and please help us strengthen the network into Chhattisgarh and into Raipur and into all the institutions in Chhattisgarh. We will be grateful for all your help.